I defended it. Why would you be attracted to that? आप क्यों इससे आकर्षित होकर आ जाते हैं वापस? And the mothers came back. This is a miracle. और माताएं वापस आ गई, ये तो अचंभा है. Should we take some spiritual medicine? ये हमें कुछ आध्यात्मिक औषधि लेनी चाहिए. We need it. हमें इसकी जरूरत है. I can give to him. Huh? What is it? Another one is there. Be careful, now the girl one. Really? This one is a little heavy from my neck. Put it on for 1 minute. ये मेरे गर्दन के थोड़ा भारी है. Smells really good. सुगंध भी बहुत अच्छी है इसकी. Ah, I knew there was a reason behind that. मुझे पता था इसके पीछे अवश्य कोई कारण होगा. Guru means heavy. गुरु का मतलब ही होता है भारी. Hare Krishna. We're going to make it very simple for you tonight. आज हम आपके लिए बहुत सरल करने वाले हैं चीजों को. The simpler the better, right? जितना सरल उतना बेहतर. Otherwise it seems very confusing sometimes. वरना कभी-कभी बहुत भ्रमित करने वाला लगता है. So we're going to make it real simple. तो आज हम बहुत ही सरल बनाएंगे इसको. By mercy of the Lord, all your questions and doubts will be answered. भगवान की कृपा से सारे आपके संदेह और सवाल नष्ट हो जाएंगे. Whatever you're thinking, whatever you're worrying about, जो भी आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप चिंता कर रहे हैं, whatever your question is, जो भी आपके सवाल हैं, whatever your doubt is, जो भी आपके संदेह हैं, by Krishna's mercy, everything will be crystal clear. कृष्णा की कृपा से सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा. How eager are you for the answer? आप कितने उत्सुक हैं उत्तर पाने के लिए? Don't wait for your answer. अपने उत्तर को सुनने का Wait for Krishna's answer. कृष्णा के उत्तर का इंतजार कीजिए. And don't put on your time clock. और अपने घड़ी पे मत डालिए उनको. Everything will happen on Krishna's time. सब कुछ कृष्णा के समय के आधार पे होगा. So be open. तो खुले दिमाग में What does Krishna want? कृष्णा क्या चाहते हैं? And how he wants to do it? और वो कैसे चाहते हैं हम करें? In Krishna's time. और कृष्णा के समय अनुसार. But if you're expecting, I want to hear this, and it's going to be like this, and it has to be like that, on this time clock, you'll only hear your mind. तो अगर आप चाहेंगे कि मैं बस ये सुनना चाहता हूँ, इस तरीके से सुनना चाहता हूँ, ये चीज़ें सुनना चाहता हूँ और अपने समय के अनुसार सुनना चाहता हूँ, तो आप बस अपने मन को सुनते रहेंगे बैठकर. If you like hearing your own mind controlled by Maya and that makes you happy, go for it. और अगर अपने मन को आप सुन के खुश होते हैं जो माया के द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो आप करते रहिए ऐसा. If you're tired of it and you want some better information, then listen to Krishna. और अगर आप थक चुके हैं उस जानकारी से और आप बेहतर जानकारी चाहते हैं, तो आप कृष्णा को श्रवण कीजिए. Are we ready? आप तैयार हैं? Are you awake? या आप जगे हुए हैं? Okay. You see how I told you as time goes, less and less people will come? आप देख रहे हैं जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोग और कम होते जा रहे हैं यहाँ I पे. told you that. ज़्यादातर. Prabhupada said, don't be surprised, people will leave. प्रभुपाद कहते हैं इस बात पे अचंभित मत होइए, कितने लोग चले जाएंगे यहाँ से. Be surprised who through everything will stay. इस बात से अचंभित हो जाइए कि कितने लोग हैं जिन सारे मुश्किलों के बावजूद भी यहाँ बने रहेंगे. What did they say in English? We want the cream of the crop. ये अंग्रेजी में कहावत है जो सभी मलाई चाहिए सभी सबसे ऊपर. Class, not mass. जो हमें क्लास चाहिए और झुंड में लोग नहीं चाहिए. That's better. ये ज़्यादा बेहतर है. It's opposite of communism. ये समाजवादी का बिल्कुल उल्टा है. Communism killed all the class and the intelligence. और ये साम्यवादी ने सारे बुद्धि और सारे श्रेणियों And को खत्म then कर what's दिया. left, then no head of the society, और फिर क्या रह गया? समाज का सर ही खत्म हो गया. then just chaos. तो पूरी तरह से बस भगदड़ मच गई. Is it? Anyway, that's another topic. ये दूसरा विषय है. You know how they have this foolish thing? I'm sorry. You know how they have this foolish thing? There's a couple of things that aggravate me when these people make like these false hearts. बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जो है हमेशा कुछ भड़का देती है कई तरीके से. आपने देखा कई बार लोग जो है ये it's so cheap, you know. कि दिल की जो हृदय का तस्वीर ऐसा गलत तस्वीर ऐसा दिखाते हैं. They just make this hard. You see this? आपने देखा है वो दिल की इस तरह का तस्वीर बनाते हैं.
And whenever I see that, I just want to slap that person. You know? It's और जब भी okay, मैं ऐसा trying to be देखता हूँ, devotee, you know. मैं उसको थप्पड़ मारना चाहता हूँ, But it's so sentimental, you know. लेकिन इतना भावनात्मक है ये. So someone sent me a photo of Stalin, and he's doing that. He's making a heart, you know. It's hilarious, you know. I gotta show it to you, you know. It's like only my heart, only love, you know, love and affection. तो किसी ने मुझे स्टालिन की तस्वीर भेजी, जिन्होंने भी इस तरह दिल का हाथ अपने तरीके से हाथ बनाया हुआ था, तो बहुत ही अचंभित था ये. Even Stalin's using this, you know. यहाँ तक कि स्टालिन भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अब. Hare Krishna. We ready? हम तैयार हैं? Prabhupada said, chant and be happy. प्रभुपाद कहते हैं कीर्तन कीजिए, खुश होइए. That's the secret. ये रहस्य. If we connect with Krishna and please Krishna, He's reservoir of all pleasure. अगर हम If कृष्ण से He's संपर्क, happy, we'll be happy. हम कृष्ण के साथ संपर्क करते हैं, वो सारे आनंद के स्रोत हैं. अगर वो खुश हैं तो हम भी खुश होंगे. Prabhupada said, if you think you can be happy without Krishna and without serving Krishna, you're a madman. प्रभुपाद कहते हैं अगर आप सोचते हैं आप कृष्ण से अलग होकर खुश हो सकते हैं, बिना कृष्ण की सेवा पर किए खुश हो सकते हैं, तो आप पागल व्यक्ति हैं. You're not a madman, are you? आप पागल व्यक्ति नहीं है ना. He's like a saint. He's like a saint now. ये साधु है. He's going for bhakti instead of jnana. अब ये भक्ति के पीछे जा रहे हैं, ज्ञान के He पीछे. realized it's better. वो जान चुके हैं वो ज़्यादा बेहतर है. Shri Gaurnitai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gurudeva ki, Samaveda Bhaktivinoda ki. I'm getting there. हम वहाँ जब पहुँच रहे हैं धीरे धीरे. No one said it was going to be easy. किसी ने नहीं कहा था ये इतना आसान होगा. Danger at every step. हर एक कदम में कुछ न कुछ खतरा है. Namo Vishnu-padaya Krishna-kataya Bhutale Srimate Govinda-Swami Nityanamine. Prabhu Nityananda
ki, Srila Gaur Govinda Swami Srila Gurudeva ki, Samaveda Bhaktivinoda ki, Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacaya Shishimad Gaur Govinda Swami Srila Gurudeva ki, Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacaya Shishimad Stabangre Srila A.C.Bhaktivedanta.Swami Srila Prabhupada ki, Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacaya Shishimad Stabangre Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Brinda ki, Namacharya Srila Hari-katha Thakur ki, Brahmasika Ho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasudeva Shri Gaura Bhakta Vrinda ki, Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakund Radhakund Giri Govardhana ki, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mayapur Navadvip Dham ki, Shri Kshetra Jagannath Puri Dham ki, Ganga Maya ki, Jamuna Maya ki, Bhakti Devi ki, Tulasi Maharani ki, Shri Gaurnitai ki, Shri Krishna Balaram ki, Shri Jagannath Baladev Lady Subhadra Devis ki, Shri Radha Gopinath ki, Shri Radha Gopal Ju ki, Shri Radha Madhava ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Premanam Sankirtan Jagya ki, Go Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru, Shri Gauranga Mahaprabhu, Srila Prabhupada, Srila Gurudev. So I was reading today in Bhagavad Gita in the 13th chapter. तो आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के 13वां अध्याय पढ़ रहा था. About nature, जो प्रकृति के बारे में है. the enjoyer, भोगकर्ता and consciousness. और चेतना. And I found a nice verse that very simple, very nice verse. और मुझे एक बहुत ही अच्छा श्लोक मिला, बहुत ही सरल है ये. Are you awake? क्या आप जगे हुए हैं? You listen, yeah, you. हाँ आप. Put the hat on. Are you awake? You're listening? Can you hear with that hat on? क्या आप उस टोपी के साथ भी मुझे सुन पा रहे हैं? It's going in? क्या कान के अंदर Okay, जा रहा है? I'm just checking. मैं बस चेक कर रहा था. I want to make sure it's going in there. मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता था ये अंदर जा रहा है या नहीं. Okay, let's try our best here. तो चलिए हम अपना श्रेष्ठ करने का प्रयास करते हैं. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita 13th chapter, text number 26. भगवद गीता 13वां अध्याय श्लोक संख्या 26. Please repeat. कृपया दोहराइए. Anye tu evam ajānantaḥ śrutvā anyebhyaḥ upāsate te api cha atitaranti mṛtyuṁ śruti-parāyaṇāḥ anye evam ajānantaḥ śrutvānyebhya upāsate te cātitaranty mṛtyuṁ śruti-parāyaṇāḥ anye evam ajānantaḥ śrutvānyebhya upāsate te cātitaranty mṛtyuṁ śruti-parāyaṇāḥ
anye, anye, others, अन्य, tu, but, लेकिन, evam, thus, इसलिए, ajānantaḥ, without spiritual knowledge, बिना आध्यात्मिक ज्ञान के, śrutvā, by hearing, श्रवण से, anyebhyaḥ, from others, अन्यों से, upāsate, begin to worship, पूजा करने की शुरुआत करता है, te, they, वे, api, also, फिर भी, cha, and, और, atitaranti, transcend, पार कर जाता है, eva, certainly, अवश्य ही, mṛtyuṁ, the path of death, मृत्यु के पथ को, śruti-parāyaṇāḥ, incline to the process of hearing. जो श्रवण की प्रक्रिया के तरफ झुकाव होता है, Translation and purport by Srila Prabhupada. अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का, Krishna is preaching. कृष्णा Krishna talking to Arjuna. कृष्णा अर्जुन से बात कर रहे हैं, He's explaining that there are those that don't have spiritual knowledge. और यहाँ बता रहे हैं वो व्यक्ति जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं So है, they're not conversant about the spiritual knowledge. तो वो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति उतने जागरूक नहीं है, But still they begin to worship the Supreme Lord लेकिन फिर भी वो भगवान की अर्चना करना शुरू करते हैं when they hear about Him from those who have strong faith in the Lord. उनके द्वारा श्रवण करके, जिनके पास भगवान के प्रति श्रद्धा है, And because of their tendency to hear from such pure authorities, और क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है ऐसे शुद्ध अधिकारित लोगों से सुनने की, they also transcend the path of birth and death, वो भी इस जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं and ultimately achieve spiritual perfection और अंततः आध्यात्मिक सिद्धि लाभ करते हैं in devotional service to the Supreme Lord. भगवान की भक्ति में। This is cold? What's cold? Is this the AC? Is it, can you just shut this off? You can put other one works? Does it work? Yes. Isn't that better? Unless the Mataji's complain. अगर माता जी को कोई शिकायत नहीं है तो We don't want any revolt here. हम किसी तरह का आंदोलन नहीं चाहते Especially हैं। after last night, I have to be careful. विशेष करके पिछली रात के बाद तो मुझे ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। Any little thing they can get to the arms, go to arms. कोई भी छोटी सी बात हो जाएगी तुरंत ये सारे हथियारों के साथ आ जाएंगे। Purport by Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, This verse is particularly applicable to modern society ये प्रक्रिया विशेष करके लागू होती है आधुनिक समाज के लोगों के लिए, because in the modern society there is practically no education in spiritual matters. क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति लोगों को कोई समझ नहीं है। Some of the people, they may appear to be atheistic और कुछ लोग देखने में नास्तिक लगते हैं or agnostic या भगवान के प्रति बिल्कुल विमुख होते हैं पूरी or तरह से, philosophical. या बहुत सैद्धांतिक लगते हैं। They may appear to be like this, वो दिखने में ऐसे लगते हैं, but actually there is no knowledge of philosophy. लेकिन असल में उनको सिद्धांत का कोई ज्ञान नहीं होता। As for the common man, if he is a good soul, और अगर कोई सामान्य व्यक्ति जो अच्छी आत्मा है, then there is a chance for advancement by hearing. तो उनके पास एक मौका है उन्नति करने का श्रवण के मार्ग से। So we don't know anything. तो हम हो सकता है But कुछ if भी ना you're a जानते, good soul, लेकिन आप अच्छी if you're आत्मा a good हैं, boy, a good girl, अगर आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छे लड़के हैं, अच्छी लड़की हैं, there's a good chance that they can advance in their spiritual life just by hearing. तो उनके पास एक अच्छा मौका है, वो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं सरलता से श्रवण करके। Therefore, this hearing process is very important. इसलिए श्रवण प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। Lord Chaitanya, who preached Krishna consciousness in the modern world,
श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिन्हें कृष्ण भावनामृत का प्रचार इस आधुनिक समाज में किया, he gave great stress to hearing. उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस बात पे श्रवण पे जोर दिया। Because if the common man simply hears from authoritative sources, क्योंकि अगर कोई सामान्य व्यक्ति किसी प्रशासनिक व्यक्ति से श्रवण करेगा, then he can progress, तो वो उन्नति कर सकता है, especially according to Lord Chaitanya. विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के आधार। If he hears transcendental vibration, अगर वो इस दिव्य शब्द ध्वनि को सुनता है, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. It is stated therefore इसलिए यहाँ बताया गया है that all people कि सारे लोग should take advantage of hearing from realized souls को फायदा उठाना चाहिए जो साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति उनके द्वारा श्रवण करने and gradually become able to understand everything. और धीरे धीरे सब कुछ समझने के योग्य बन सकते हैं। The worship of the Supreme Lord will then और फिर undoubtedly take place और फिर भगवान परम भगवान की अर्चना अवश्य हो पाएगी just by this hearing process. सरलता से श्रवण प्रक्रिया से। Lord Chaitanya has said that in this age no one needs to change his position श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है वर्तमान समय में किसी को अपना पद बदलने की जरूरत नहीं है in Varnashram system. वर्णाश्रम व्यवस्था में, But one should give up the endeavor to try to understand the absolute truth by speculative reasoning. लेकिन किसी को मनोधर्म पे परम सत्य को समझने का प्रयास छोड़ना होगा। So whatever your position is, no problem, but you must give up this addiction to speculative reasoning to try to understand who and what is God. तो जो भी आप व्यवस्था में हो वर्णाश्रम के, लेकिन आपको अवश्य इस मनोधर्म की प्रक्रिया को छोड़ना होगा परम सत्य को जानने के लिए। If we don't give that up, then we cannot hear. अगर हम इसको त्यागेंगे नहीं तो हम सुन नहीं We'll just be सकते, listening to own stupid mind. Even sitting there, we'll be only listening to own stupid mind. या फिर हम वहाँ बैठे रहेंगे फिर भी हम अपने बेवकूफ मन को बैठकर सुनते रहेंगे। So sit there, hear attentively, don't speculate to try to understand, just put your effort in trying to hear properly. तो बैठ के ध्यानपूर्वक सुनिए, मनोधर्म करने का प्रयास मत कीजिए और ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए। One should give up, Prabhupada says, the endeavor to understand the absolute truth. What is the truth? By speculative reasoning. और प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं किसी को परम सत्य को जानने के लिए मनोधर्म की प्रक्रिया को त्याग करना चाहिए। Rather, one should learn to become the servant of those who are in realized knowledge of the Supreme Lord. और उनको उन लोगों का सेवक बनने के लिए तैयार होना चाहिए जिनको भगवान के परम सत्य का ज्ञान का साक्षात्कार है। So realized knowledge of the Supreme Lord is tattva vijnanam. तो भगवान के अगर साक्षात्कार किसी को प्राप्त हो इसका मतलब उसको तत्व ज्ञान प्राप्त है। So we should learn to become the servant of those who have this tattva vijnanam. तो हमें उन लोगों का सेवक बनने का प्रयास करना चाहिए, सीखना चाहिए जिनके पास ये तत्व विज्ञान है। And hear from him about self-realization. और उनसे श्रवण करना चाहिए आत्म साक्षात्कार के And then विषय में। follow in his footsteps. और फिर उनके चरण कदमों का And पालन one करना चाहिए। will gradually, one will be gradually elevated to the position of a pure devotee. और कोई धीरे धीरे जो है शुद्ध भक्त के स्तर पे ऊपर उठ सकता है। In this verse particularly, और इस श्लोक में विशेष करके the process of hearing is strongly recommended. श्रवण की प्रक्रिया बहुत ही जोरपूर्वक बताई गई है And this is very appropriate. और ये बहुत सही तरीके से है बताया गया है। Although the common man is often not as capable as so-called philosophers. यद्यपि कोई सामान्य व्यक्ति बड़े दार्शनिकों जितने योग्य नहीं होते हैं, Faithful hearing from an authoritative person लेकिन अगर श्रद्धापूर्वक कोई प्रशासनिक लोगों से श्रवण करे will help one transcend this material existence तो फिर इस भौतिक अस्तित्व से वो बाहर आने में उनकी मदद कर सकता है and go back home, back to Godhead. और वो भगवत धाम वापस जा सकते हैं। So everything is there. तो यहाँ सब कुछ बताया गया Isn't it? है कि नहीं? Very simple, very straightforward. For the common person, for a common person with no real spiritual standing, this is how to get out of Maya, how to purify our consciousness, how to develop transcendental knowledge, how to advance in devotion, devotional service, and how to reach the goal to go back home, back to God.
तो ये बहुत सरल तरीका है किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए इस श्रवण की प्रक्रिया को अपनाना है और कैसे माया से बाहर आ सकते हैं, अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, अपने आप को योग्य बना सकते हैं भक्ति के पथ पे और अंत में भगवत धाम लक्ष्य प्राप्ति कर सकते हैं। So you're trying to figure out how you're gonna advance spiritually, right? तो आप ये Your पता question लगाना last night. तो पिछली रात आप ये सवाल पूछ रहे थे कैसे In आप what भक्ति में विकास condition कर will I सकते हैं? survive it? और मैं क्या मैं उसको उस परिस्थिति में जीवित रह And then पाऊंगा? Sanatan, he's saying, I'm just a common man. I'm just Nepalese. Is that it? और सनातन कह रहे हैं मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं तो बस एक नेपाली आदमी हूँ। Right? How we're going to advance in this day and age, in this modern day and age? तो कैसे हम इस वर्तमान समय में, आधुनिक समय में उन्नति कर पाएंगे, विकास कर पाएंगे? Manik is wondering, how will I advance? How will I understand? Everyone has the same question, isn't it? मानिक भी ये चिंता कर रहे हैं, सभी लोग ये चिंता कर रहे हैं, कैसे मैं विकास कर सकता हूँ आध्यात्मिक जीवन में? So when I read that verse, I said, everything is already there. तो मैंने जब ये श्लोक पढ़ा, मैंने देखा तो सब कुछ यहाँ तो साफ साफ लिखा है। We have no spiritual knowledge, really. हमारे पास असल में कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। Right? We know our body and our mind, 99% of the people. 99.9% लोग अपना शरीर और केवल मन जानते हैं। We don't know what to do, what not to do. हमें ये नहीं पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। It's talking about spiritual knowledge means to understand the soul, और आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब है कि अपनी आत्मा को जानना, to understand the supreme soul, परमात्मा को जानना, to be able to hear from him and get direction about the nature of the absolute truth. उनको सुन पाना ताकि हमें दिशा निर्देश प्राप्त हो सके, कैसे परम सत्य को और जाना जा For a सकता है। common person, this seems like, unbelievable. It's not possible to know all of those things. तो सामान्य व्यक्ति के लिए अविश्वसनीय लगता है इन सारी चीजों को जान पाना। And of course, without mercy, it is impossible. और अवश्य बिना कृपा के ये असंभव है। So Krishna, like Mahaprabhu, is telling this is the means, especially in the modern age. तो कृष्ण महाप्रभु के रूप में आकर बता रहे हैं, विशेष करके इस आधुनिक समय में ये प्रक्रिया है। Those who are without spiritual knowledge, जिनका कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं they're है, not conversant, they cannot explain it, discuss about it, because they don't know about it. वो इसको समझते नहीं है, वो इसको व्याख्या नहीं कर सकते, वो इसको लोगों को समझा नहीं सकते। Then they associate with Krishna's pure devotees, they hear about Krishna, अगर वो कृष्ण के शुद्ध भक्त के साथ संग करते हैं, उनसे श्रवण करते हैं, and then gradually they start to chant Hare Krishna and worship the Lord. और धीरे-धीरे जब वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगते हैं और भगवान का अर्चना करने लगते हैं, Then as we become more and more purified, we develop more and more interest to try to understand, how to understand more, how to advance more. और धीरे-धीरे जब हम और ज़्यादा शुद्ध हो जाते हैं, और ज़्यादा हम समझने का प्रयास करते हैं, कैसे और ज़्यादा चीज़ों को समझ सकते हैं, और ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। Then because Krishna holy name is the center of the topic, then we're associating with Krishna through transcendental sound vibration. क्योंकि कृष्ण का नाम, उनके बारे में चर्चा, इसमें कृष्ण केंद्र बिंदु में है, तो हमारी चर्चा में कृष्ण केंद्र बिंदु है, इसलिए हमें शुद्ध करेगा और हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। Then by his special mercy, then one become purified of all ignorance, all contamination, which is not allowing us to understand such a high spiritual topic. और ये जो हमारे अंदर अज्ञान है, तमोगुण है, उनकी विशेष कृपा से वो सारा कुछ नष्ट कर देंगे जो हमारे बाधा डाल रहा है, ताकि हम इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। Prabhupada came, he just chanted Hare Krishna Mahamantra. प्रभुपाद आए, उन्होंने बस हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना Tompkins शुरू Square किया। Park. टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में I've been there मैं वहाँ many था। times, not many times, few times. कुछ बार मैं वहाँ गया हूँ। Right? There's always some flowers around where Prabhupada was standing there, वहाँ अक्सर chanting there. कुछ न कुछ फूल पड़े होते हैं उस जगह पे जहाँ प्रभुपाद खड़े होकर कीर्तन करते थे। And of course all the hippies and the drug addicts and all the mad people are also there. They're still there. और अभी भी वो Just a new generation. और अभी भी वो हिप्पी, वो पागल लोग, वो नशेड़ी लोग जो है आसपास अभी भी वहाँ घूमते रहते हैं। आगे अगला अभी नई पीढ़ी वहाँ आ चुकी है। They have their parampara also. उनका भी परंपरा वहाँ चल रहा है। Some kind of dysfunctional disciplic succession. किसी तरह का जो बेकार परंपरा वहाँ चल रहा है। So they're also there. तो वो भी वहाँ पे मौजूद। Because without those people, how can you preach? क्योंकि उन लोगों के बिना आप प्रचार किसको करेंगे? You need some fallen souls, isn't it? आपको कुछ पतित जीवात्मा चाहिए। What happened? Oh, you want to tighten that for me? Thank you, Adam. So, because of the tendency to hear and to like to hear about the topic, gradually, more and more, तो अगर हमारी ये सुनने की प्रवृत्ति है और हमारे ये श्रवण की प्रक्रिया पसंद आ रही है, तो धीरे-धीरे हम और ज़्यादा। But they must be pure devotee. They must have strong faith.
लेकिन इनको अवश्य शुद्ध भक्त होना होगा और उनके अंदर अटूट श्रद्धा It होनी cannot be चाहिए। theoretical knowledge. और ये मौखिक ज्ञान नहीं होना चाहिए They must be authorized. और उनको अधिकार प्राप्त होना चाहिए। If they're authorized, means Krishna will empower them. अगर उनको अधिकार प्राप्त है तो कृष्ण उनको सशक्तिकरण देंगे। That means Krishna is agreeing, if we're sincere in our hearing and chanting, that he'll manifest there. यानी कि कृष्ण वहाँ सहमत हो रहे हैं, अगर हम गंभीर ईमानदार हैं उनको सुनने के लिए तो कृष्ण वहाँ प्रकट होंगे। And so without Krishna's manifestation, there's no spiritual benefit. और बिना कृष्ण के प्रकट हुए बिना किसी भी तरह के आध्यात्मिक उन चीजों की We'll कोई all संभावना just be, नहीं। acting like we're scholars and we're philosophers and everyone has an opinion about religion, right? We'll be discussing on false ego, mental, intellectual platform only. तो सभी कोई बस नाटक करेंगे, वो बहुत बड़े सिद्धांतों को जानते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं और इस तरह से मिथ्या अहंकार के स्तर पे, मानसिक स्तर पे बस बातचीत करते रहेंगे। And on that platform, it's like a competition, और उस स्तर पे बस लोग प्रतियोगिता करते right? हैं। Like who's the smartest, कौन ज्यादा बुद्धिमान है, right? Who's the most pious? कौन सबसे ज्यादा पुण्यात्मा है, Who comes from the best religious family? कौन सबसे अच्छे धार्मिक परिवार से आता Right? है। It just becomes like a false ego competition. फिर वहाँ मिथ्या अहंकार का प्रतियोगिता शुरू हो It has जाता है। nothing to do with bhakti. It has nothing to do with devotion. इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। Because how can it be if the super soul and the soul are not involved in the conversation? ये कैसे हो सकता है अगर आत्मा परमात्मा उस वार्तालाप में सम्मिलित नहीं है? That means no Bhagavan, no Bhakta, no Bhakti. इसका मतलब भगवान, भक्त, भक्ति तीनों वहाँ नहीं है। So it's basically a materialistic exercise तो मूलतः ये एक तरह का शारीरिक कसरत हो रहा है वहाँ, where everybody is trying to establish themselves. जहाँ सभी लोग एक दूसरे को अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर So रहे the हैं। whole thing completely materialistic. तो पूरी सारी चीज पूरी तरह से भौतिक है। Because without Bhagavan, Bhakta and Bhakti, there's nothing spiritual about it. क्योंकि बिना भगवान, भक्त और भक्ति के उसमें कोई भी आध्यात्मिक नहीं है। So unless we hear from authorized, empowered representative of Krishna, तो जब तक हम कृष्ण के द्वारा अधिकारकृत और सशक्तिकरण प्राप्त किए व्यक्ति से नहीं सुनते हैं, they have more than Gyan. उनके पास ज्ञान से ज्यादा ऊपर चीज They है। have Tattva Vigyan. उनके पास तत्व That विज्ञान। means Krishna has directly revealed himself to them with unflinching faith. इसका मतलब कृष्ण ने सीधे सीधे उनको अपने सामने, कृष्ण ने उनको अपने स्वयं को प्रकाशित कर दिया उनके सामने इस तत्व विज्ञान के साथ On platform of the soul. और आत्मा के स्तर That पर। means Krishna has revealed and they have that intelligence and faith directly from Krishna. यानी कि कृष्ण ने स्वयं को प्रकाशित किया है उनके सामने और उनको सीधे सीधे श्रद्धा और बुद्धि भगवान से By प्राप्त है। Krishna's mercy and arrangement, if we can come in contact and associate and hear from those persons, तो अगर कृष्ण की कृपा से हम ऐसे लोगों के संग में आकर श्रवण कीर्तन कर सकते हैं, then potentially, if we're sincere in our speaking and hearing, then Krishna says, I'll go to that place, I'll run to that place. तो अगर हम ईमानदार हैं उस श्रवण कीर्तन में, तो कृष्ण कहते हैं मैं उस जगह पर दौड़ कर जाऊंगा। So my Gurudev used to explain that bona fide Guru, he can make Krishna appear. तो मेरे गुरुदेव कहा करते थे प्रामाणिक गुरु कृष्ण को प्रकट करा सकते हैं। Now that's a big statement, तो ये बहुत बड़ा कथन isn't it? है कि नहीं? Right? So many gurus, so many preachers, so many teachers, priests, ministers, right? Everybody's saying, yes, I'll make God appear in front of us, isn't it? बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे गुरु, बहुत सारे नेता, बहुत सारी बातें कहते हैं मैं कृष्ण भगवान को प्रकट कर सकता हूँ अपने वाक्यों में। Then you should listen to me because God is telling me to tell you like this, और isn't आपको it? मुझे सुनना चाहिए क्योंकि भगवान मुझे कुछ कह रहे हैं आपको ऐसी बातें बताने के लिए। I heard one of these preachers, he said, and they say it in a very interesting way. They said, God has put something on my heart. और मैं ऐसे एक प्रचारक को सुन रहा था और ये बहुत रुचिकर तरीके से चीज़ों को बताते हैं, कहते हैं भगवान ने मेरे दिल में कुछ बातें रखी। And this guy was saying only 4 words. और उन्होंने कहा सिर्फ 4 बातें उन्हें मुझे कही है। Make arrests, make arrests. This is what he's telling. Like when you capture the criminal. तो अपराधी को पकड़ो और अपराधी को पकड़ो। So it's basically anything that comes into your head, right? You just say, God has told me on my heart these 4 words, and everyone's like, oh, God has told on his heart, we should accept it as absolute, तो असल में उनके दिमाग में कुछ भी बात आ जाता है और फिर वो लोगों को इस तरह कहते हैं कि भगवान ने मेरे दिल में ये 4 बातें रखी है और लोग जो है उसको इस तरह स्वीकार भी कर लेते हैं, ओ भगवान ने इनको ये सारी 4 बातें कही। And then all the people are like, oh, God has touched his heart, these 4 words, what does it mean,
और बहुत सारे लोग सोचते हैं, ओ भगवान ने 4 बातें इनके दिल में रखी है, इन 4 बातों का मतलब क्या है? Are you awake? You all right? And what does this have to do with devotional service? आप जगह आप ठीक है, और इन सारी चीजों का भक्ति से क्या Make लेना a देना? rest. Make a rest. Right? अपराधी को पकड़ो, अपराधी को पकड़ो। It's just, it looks like maybe he was in the jail or something. I don't know. ऐसा लगता है Maybe he saw some criminal politicians or something. I don't know why he's telling make a rest. पता नहीं वो ऐसी बातें क्यों कह रहा था। वो हो सकता है किसी जेल में था या किसी अपराधी नेता को उन्होंने कैद खाने में देखा था, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे थे। But the point is that they're all saying that they know God, they have a relationship with God, God is inspiring their words, God is telling you what to do through them. They're all more or less saying exactly the same thing, isn't it? लेकिन वो सारे लोग कम या ज़्यादा एक ही बात कह रहे होते हैं कि भगवान उनके माध्यम से बात कर रहे हैं, वो उनका भगवान के साथ संपर्क है, वो उनका भगवान के साथ संबंध है, भगवान उनको प्रेरणा दे रहे हैं कुछ बातें कहने के लिए। So सारी यही बात कहते हैं। How do you know which words, which instructions are actually coming from God and really are meant for you? How will you understand that point? लेकिन आप ये बात कैसे समझ पाएंगे उनमें से कौन सारे निर्देश भगवान से आ रहे हैं? आप इस बात को कैसे पता लगा पाएंगे? When we want to hear something, जब हम कुछ सुनना चाहते हैं, whether it's spiritual or material is another topic. वो आध्यात्मिक हो या भौतिक, ये दूसरा विषय है। But if somebody tells us what we want to hear, we say, oh, God was talking through him, you know. और जैसे ही हमें कोई चीज़ वो बातें कहता है जो हम सुनना चाहते हैं, वो हम कहते हैं भगवान उनके द्वारा मुझसे बात कर रहे Or हैं। through her, in all fairness, right? उनके या फिर किसी स्त्री के I माध्यम have to से। be politically correct nowadays, you know. मैं राजनीतिक रूप से सही बातें कहना चाहता हूँ। They have this thing called the woke police. एक कहावत है वहाँ पर कि पुलिस को बुला दिया जाएगा। Anyway, that's another topic. ये दूसरा विषय है। I don't want to get sidetracked. We're talking about God, you know, we're talking about Krishna. मैं रास्ते से भटकना नहीं चाहता। हम भगवान के बारे में बात करें, हम कृष्ण के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। So, how we're going to really know what's coming from Krishna? तो हम असल में कैसे पता लगा पाएंगे असल में कृष्णा से क्या आ रहा है? Right? If you're supposed to be in the class, right, and you're hungry, अगर आप क्लास में बैठे हैं और आप भूखे हैं and you're supposed to listen to the class, और आपको क्लास को सुनना है, but somebody comes and says, hey, you hungry? You want to eat something? लेकिन कोई अगर आपको कहे वो आपको भूख लगा, आप कुछ खाना चाहते हैं And you're like starving, you know? और आप भूख से मर रहे हैं And you're like, God sent this person. और आप कहेंगे ओ भगवान ने इस आदमी को भेजा है मेरे लिए, Because only God knows I'm hungry, you know? क्योंकि भगवान को पता है कि मैं भूखा हूँ, Otherwise, how is this possible? वरना ये कैसे संभव हुआ? Then we're running out of the class, right? You're just sitting there trying to eat something, you और हम know? फिर क्लास से बाहर भाग के चले जाएंगे और हम खाना शुरू कर देंगे। So when we hear what we want to hear, we say, oh, this is coming from God. तो जब हम वो सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं तो हम कहते हैं ये भगवान से आ रहा है। And if it doesn't line up with our plan and our thoughts and our idea, then we say, oh, now how do I know this is coming from God? You know? और जब वो उस तरीके से नहीं आता जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, जैसा हमारा विचार है, जैसी हमारी योजना है, तब हम उस पर संदेह करने लगते हैं, वो हो सकता है ये भगवान से नहीं आ रहा है। How will I know this really coming from Krishna? कैसे मैं समझ पाऊंगा कि ये असल में कृष्ण से आ रहा है? If it's not coming from Krishna, coming from Maya. अगर ये कृष्ण से नहीं आ रहा है, अगर ये माया से आ रहा है, So whatever Maya tells, then that plan's a disaster from the beginning. तो जो भी योजना माया से आती है वो शुरुआत से ही पूरी तरह से भयानक होता है योजना, Because it means it's not sanctioned and blessed by Krishna. क्योंकि इसको कृष्ण के द्वारा अनुमति या आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। It's not what Krishna wants for you. ये कृष्ण आपके लिए नहीं चाहते हैं, It's what Maya wants for you. ये माया आपके लिए चाहती है। That means it's going to be problem from the beginning and the middle and the end, इसका मतलब समस्या शुरू, मध्य और अंत तक आपको होगी, which will just cause confusion and suffering and dissatisfaction. जिसकी वजह से आपको हमेशा दुख होगा, हमेशा असंतुष्टि प्राप्त होगी। So we need to know what does Krishna want us to do, and to give the strength and understanding how to do it. That's only prayer. तो हमें बस एकमात्र प्रार्थना करनी है कि कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं और हमें ये शक्ति दे, हमें इतनी योग्य बनाए कि हम उसको पूरा कर सकें। Because as we read the other day, Prabhupada saying, you know, everyone's from the morning to the night, everyone has questions and answers, right? क्योंकि हम दूसरे दिन पढ़ रहे थे, प्रभुपाद कह रहे थे, प्रत्येक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक हमेशा क्या सवाल या जवाब कर रहे होते हैं। We have so many problems. हमारे पास बहुत सारी We have समस्याएं so हैं, many goals, so much desires. हमारे पास बहुत सारे लक्ष्य हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं। So we're asking questions and looking for answers, how to fulfill our desires and get rid of all of the suffering condition. तो हम ये सवाल पूछ रहे हैं कैसे अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और कैसे अपने दुखमय स्थिति से बाहर आ सकते हैं। So how are we going to get the answers from Krishna? This is topic.
तो कैसे हमें ये सारे उत्तर कृष्णा से मिल सकते हैं, ये हमारा If विषय you है। don't want to know what Krishna wants, what's best for you, then you're just basically asking Maya to tell you what to do. तो अगर आप कृष्णा से नहीं जानना चाहते हैं आपके लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो आप जो है माया से असल में जानना चाहते हैं। You'll just आपके go लिए on क्या है। speculating, guessing. आप बस ऐसे मनोधर्म करते रहेंगे, अंदाजा लगाते My रहेंगे। Gurudev calls it groping in the dark. मेरे गुरुदेव इसको कहा करते हैं अंधेरे में भटकते रहना। So the whole process is faulty from the beginning. तो पूरी प्रक्रिया शुरुआत से ही त्रुटियों से भरी है। So how we can expect a nice, successful material and spiritual result? तो कैसे हम किसी भी तरह से सफल भौतिक या आध्यात्मिक फल की उम्मीद लगा सकते हैं? So Krishna only manifests through his authorized, empowered representatives. तो कृष्णा सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारकृत और सशक्तिकरण प्राप्त व्यक्ति के माध्यम से But ही प्रकट होते हैं। if you ask any guru or preacher or teacher, they'll say, I'm an authorized, empowered representative. लेकिन आप किसी भी प्रचारक, शिक्षक, गुरु से पूछेंगे तो वो कहेंगे हाँ मैं अधिकारकृत सशक्तिकरण प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूँ कृष्ण। Because they're reading, they say you have to be authorized, empowered representatives. They say, oh, I'm an authorized, empowered representative. क्योंकि वो That's भी why you should listen to me. क्योंकि वो भी इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं। कृष्णा जब बताते हैं कि आपको जो है मेरे द्वारा सशक्तिकरण, मेरे द्वारा अधिकार प्राप्त होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को जब वो पढ़ते हैं तो वो भी स्वयं को कह देते हैं मैं Because मुझे अधिकार प्राप्त many times they know the Shastra. क्योंकि उन लोगों को शास्त्र पता है। Right? If you say, God's sent me to you and is speaking to you through me, अगर कोई that's not authoritative enough, right? अगर कोई बस आकर कहे आपसे कि भगवान ने मुझे भेजा है आपसे कुछ बताने के लिए, तो उसके अंदर उतना ज़्यादा प्रशासनिक रूप से उतना ज़्यादा सही नहीं है, आधिकारिक रूप से। God works through people. और भगवान लोगों के माध्यम से काम करते हैं। Right? You can say it like that, God works through people. आप ऐसा कह सकते हैं Or you can say लोगों के God माध्यम से works काम करते through हैं। authoritative, empowered representatives. Then you're like, wow, I should listen to this guy, लेकिन कोई अगर आकर कहे कि भगवान अपने द्वारा अधिकारीकृत सशक्तिकरण प्राप्त व्यक्ति के माध्यम से बात करते हैं तो लोग कहेंगे अरे वाह ये कितनी Because अच्छी he बात है, मुझे इसको सुनना चाहिए। realizing it has to be authoritative, it has to be empowered. क्योंकि अब आप ये सुन पा रहे हैं यहाँ पे कि वो कह रहे हैं कि उसको जो है अधिकार प्राप्त होना चाहिए, सशक्तिकरण प्राप्त होना चाहिए। So now I'm telling you, it's authoritative and it's empowered. तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये मुझे अधिकार प्राप्त है, मुझे सशक्तिकरण प्राप्त है। But how are you going to know that? लेकिन आपको कैसे पता चलेगा ये बात? Of course, you can judge by the effect, the results. अवश्य आप फल से समझ सकते हैं कैसा फल आपको प्राप्त होगा। If Guru, real bona fide Guru, can make Krishna appear, and Krishna actually appears by his causeless mercy, क्योंकि प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु कृष्ण को प्रकट कर सकते हैं और कृष्ण अपने अहेतु की कृपा से वहाँ प्रकट होते हैं। then by Krishna's association through transcendental sound vibration, तो कृष्णा के साथ संग करके और उस दिव्य शब्द ध्वनि के साथ संग करके then we should see all the effects of associating and hearing and chanting about Krishna. तो हमें वो सारे प्रभाव दिखेंगे जब हम कृष्ण के साथ श्रवण कीर्तन और उनके साथ संग करेंगे। तो I remember one time I gave a class in ISKCON temple, मुझे याद है एक बार मैंने इस्कॉन मंदिर में एक क्लास दिया and there was many disciples of different gurus. और वहाँ अलग-अलग गुरुओं के बहुत सारे शिष्य So थे। I was giving a topic on what are the effects that you should expect if you're properly hearing in the right association. तो मैं That इस was the विषय पे वहाँ topic. चर्चा कर रहा था, उनको बता रहा था कि क्या आपको आपके अंदर प्रभाव दिखेगा जब आप सही संग में सही तरीके से श्रवण करेंगे। Isn't that a nice topic? क्या ये अच्छा विषय नहीं है? What effects should you expect if you're hearing properly in the proper association? आपको किस तरह के उम्मीद रखनी चाहिए, किस तरह का प्रभाव की उम्मीद रखनी चाहिए आपके अंदर जब आप सही संग में श्रवण करें सही तरीके से। Right? So everything from purification of consciousness तो सभी कुछ चेतना की शुद्धिकरण से to answering your questions, destroying your doubts, आपके सवालों का जवाब, आपके संदेहों का नष्ट होना, explaining scientifically the details of these tattvas, Krishna tattva, Guru tattva, और वैज्ञानिक रूप से ये सारे तत्वों को समझाना, कृष्ण तत्व, गुरु तत्व बहुत बारीकी से, giving us, strengthening our spiritual desire and inspiration to want to surrender more to Krishna and to get out of Maya. That strength of determination and strength of desire should increase. हमारी इच्छा शक्ति, हमारा दृढ़ निश्चय कि हम कृष्णा को शरणागत करना चाहते हैं, माया से बाहर आना चाहते हैं। Our faith should increase. हमारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए। Right? Our spiritual ears and eyes should be more and more by their mercy manifested. आध्यात्मिक नेत्र, आध्यात्मिक कान उनकी कृपा से और ज़्यादा प्रकट होने चाहिए।
So anyway, you can judge by the effect. तो आप इस तरह से फल के आधार पे न्याय कर सकते हैं। So when I was saying like this, तो जब मैं इस तरह से बातें करने लगा, everyone in the room, mostly they were getting very disturbed by this conversation, by this emphasis. तो ज़्यादातर लोग जो उस कमरे में मौजूद थे, मेरे इन बातों पे जब मैं जोर दे रहा था, वो इस बातों से बहुत परेशान होने लगे। Right? And at first I was like, why are they all so disturbed by this topic, you know? और शुरुआत में मैं ये सोचने लगा, ये सारे लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं इस विषय पे चर्चा। And then I realized maybe they're not checking the boxes, you know? तब मैं समझ पाया, असल में इनको ये सारे फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं इसीलिए। Right? So if I say, you know, by hearing from my bona fide guru, Srila Govinda-Swami, he was able to purify my consciousness and make me able to hear and understand and put faith in this transcendental knowledge. I said, check, that's definitely, I got that. तो अगर मैं कहूँ कि मेरे आध्यात्मिक गुरु श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज से श्रवण करने के बाद उन्होंने मेरी चेतना को शुद्ध किया और मैं आध्यात्मिक विषय को और ज़्यादा समझ पाया, और ज़्यादा श्रद्धापूर्वक मैं सारे अपनी श्रद्धा में बढ़ा पाया कृष्ण के प्रति, तो मैंने वो टिक मार किया, हाँ मुझे ये फल प्राप्त हुआ उनसे श्रवण करके। Then any questions I have, philosophical, and how to reconcile all of this different philosophy, right? How do I reconcile and understand it properly? From Srila Govinda-Swami, check. तो जब मैंने श्रील गौर Definitely, he helped me understand that. तो जब मैंने श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज से श्रवण किया, उन्होंने मेरे सारे संदेहों को नष्ट किया और जो भी मेरे अंदर सैद्धांतिक भ्रम थे, उन तत्व भ्रम को उन्होंने सारे को खत्म किया और मुझे सही तत्व ज्ञान दिया। Then he's able to explain very technical spiritual knowledge in a simple way from Srila Prabhupada's books and teachings. Check. तो उन्होंने बहुत ही तकनीकी तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से सारे सिद्धांतों को श्रील प्रभुपाद की किताबों से बहुत सरलता से मुझे समझाया, तो ये भी मुझे फल उनसे प्राप्त हुआ श्रवण। Then all doubts and confusion, everything cleared, everything answered. Check. सारे मेरे भ्रम, सारे मेरे संदेह, सारे सवालों का जवाब मुझे मिल गया, उस ये भी फल मुझे। So everybody thinks they have a guru, तो सभी कोई सोचते हैं and they're all disciple of the guru who's in parampara, representing Krishna, Krishna parampara. और सभी कोई सोचते हैं उनके गुरु परंपरा कृष्ण परंपरा से हैं। But why you're not getting those results? लेकिन आपको ये सारे फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहे हैं? Why instead is your faith, right? Why are you getting shaky? आपका श्रद्धा जो है हिल क्यों रहा है इतना? Because the effects, you cannot honestly say the effects are there. There's no effectual benefit by that association hearing process. क्योंकि आप ईमानदारी से आप ये कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ संग करके श्रवण करके आपको ये सारे फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। So naturally this will raise some doubt. तो अवश्य If you're intelligent, अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपके अंदर ये संदेह उत्पन्न होगा। So wait a second, I'm not getting any of those effects. और रुको थोड़ा, मुझे तो ये सारे प्रभाव मिल नहीं रहे हैं। Of course, the speaker must be qualified, the hearer must be qualified. और अवश्य वक्ता को भी योग्य होना होगा और श्रोता को भी योग्य होना होगा। In order for Krishna to manifest there, in order to get those spiritual effects, all of those things, it's a great science, must be, everything part of that must be there. और कृष्ण, ताकि कृष्ण वहाँ प्रकट हो और अपने हेतु की कृपा से और हमारे सारे संदेह नष्ट हों, ये सारे भी इस प्रक्रिया का भाग है, हमें भी योग्य होना होगा। And all of that comes simply by hearing. और ये सब कुछ आता है सरलता से श्रवण करके। From authorized, realized representative of Krishna. जो अधिकारकृत और साक्षात्कार प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं कृष्ण के। Because without Krishna manifesting there by the mercy of our spiritual master, how can you get the effects of that hearing process? क्योंकि बिना कृष्ण के वहाँ प्रकट हुए बिना और प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की कृपा प्राप्त किए बिना ये सारे फल हमारे अंदर नहीं दिख पाएंगे। What makes it effective is Krishna's presence. और क्या इसमें प्रभाव डालता है वो कृष्ण की मौजूदगी। And Krishna says, by my special mercy, I'll purify all the contamination, tamagun, all of that thing is blocking you from within your heart, to show you special mercy. और कृष्ण कहते हैं अपनी विशेष कृपा देने के लिए आपके अंदर सारा जो कलमश है, सारा अज्ञान है, तमोगुण है, इसको मैं नष्ट कर दूंगा। So Guru knows Krishna wants, Mahaprabhu wants to shower special mercy on the common people who don't have any real spiritual standing. तो गुरु जानते हैं, महाप्रभु जानते हैं, वो सारे पतित जीवात्माओं को के ऊपर कृपा बरसाना चाहते हैं जिनको सामान्य व्यक्ति, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है अभी। And they have unflinching faith in Krishna, holy name, and Krishna-katha, that Krishna directly is manifesting there. और उनके पास अटूट श्रद्धा है भगवान के पवित्र नाम में, भगवान के कथा में, क्योंकि भगवान सीधे सीधे वहाँ प्रकट होते हैं।
And the main service of the Guru is to do kirtan, और गुरु की सबसे प्रमुख सेवा है कीर्तन करना, to speak about Krishna, to chant Hare Krishna. कृष्ण के बारे में बताना, हरे कृष्ण महामंत्र Because कीर्तन this करना। is like instrument that क्योंकि- Krishna is using in order to manifest in the transcendental sound vibration. क्योंकि ये सारे वो उपकरण हैं जिसका कृष्ण इस्तेमाल करते हैं वहाँ प्रकट होने के लिए। So that authorized, empowered representative, Krishna will use that guru, bona fide guru, to manifest in that association through transcendental sound vibration. तो उस अधिकारकृत और सशक्तिकरण प्राप्त किए हुए गुरु को कृष्ण इस्तेमाल करते हैं प्रकट होने के लिए और उस दिव्य शब्द ध्वनि में संग के श्रवण के माध्यम से प्रकट होते हैं। So we should pray to Krishna, please, I need to hear you and I need your association, and I understand by Guru Sadhana and Shastra that that will manifest through your true representative, authorized representative in your parampara. तो हमें कृष्ण से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो वहाँ प्रकट हो और हम गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से भी समझ पाएं कि कृष्ण वहाँ प्रकट हो रहे हैं। And please give intelligence and faith to understand it, और मुझे बुद्धि और श्रद्धा दीजिए ताकि मैं उस व्यवस्था को समझ पाऊँ and then help us how to do this submissive hour reception. और हमारी मदद कीजिए कि कैसे हम विनीत भाव से श्रवण कर सकें। Right? This process of hearing, Shravanam, first most important aspect of devotional service. ये प्रक्रिया है श्रवण सबसे पहली और महत्वपूर्ण अंग है भक्ति के मार्ग में। It's even in the Bhagavad Gita. ये तो भगवद गीता में भी ये बातें Can you believe it? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? Did you know this was in the Bhagavad Gita? क्या आपको पता था ये सब भगवद गीता में लिखा हुआ है? You're studying, right? You're reading Prabhupada's book. आप पढ़ रहे हैं श्री प्रभुपाद की किताबें। And then Krishna says, because of your tendency to become more and more eager and interested to hear about me in the association of my pure devotee, और कृष्ण यहाँ बता रहे हैं आपकी जो प्रवृत्ति और रुचि जब बढ़ती है कृष्ण के बारे में श्रवण करने के लिए उनके शुद्ध भक्त के संग में, by that process they transcend the path of birth and death. और इस प्रक्रिया का जब वो पालन करते हैं तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से वो बाहर आ जाते हैं। So they get purified enough to understand how to surrender to Krishna. तो इतना शुद्धिकरण प्राप्त कर लेते हैं कि वो समझ पाए कृष्ण को And कैसे Krishna शरणागत says, करना है। if you surrender to me, I'll destroy your sinful desires and your sinful reactions. और कृष्ण बताते हैं अगर आप मुझे शरणागत करेंगे तो मैं आपके सारे पाप कर्म के फलों पाप कर्मों को नष्ट कर दूंगा। Which is why we're suffering condition in the first place. जिसके कारण से हम इस दुख में परिस्थिति में हैं। And Krishna said, and I'll release you from Maya. और कृष्ण बताते हैं मैं आपको माया से मुक्त कर दूंगा। So if we accept Krishna's process by which he's giving us that mercy, तो अगर हम ये कृष्ण की प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं जिसके माध्यम से हमें वो कृपा प्राप्त हो सकती है, through the simple process of Shravanam Kirtanam, जो बहुत सरल प्रक्रिया है श्रवण कीर्तन की, the end result will be that we will transcend this path of birth and death. तो अंत फल हमें ये प्राप्त होगा कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाएंगे। We'll get out of Maya हम माया से बाहर आ just by hearing. जाएंगे सरलता से श्रवण करके। We have a hearing problem. हमारे पास श्रवण की समस्या Krishna है। says, because you're a big false ego, you can't hear properly. कृष्ण कहते हैं अपने मिथ्या अहंकार की वजह से तुम मुझे सुन नहीं सकते हो। There's this problem. ये समस्या है। So it has to get purified out, isn't it? इसीलिए इसको शुद्ध करके बाहर निकालने की जरूरत है। So not only do we transcend the path of birth and death, ultimately we achieve spiritual perfection ना तो हम सिर्फ जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाएंगे बल्कि हमें आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होगी through the Supreme Personality of Godhead, परम पुरुषोत्तम भगवान के माध्यम to से। the Supreme Lord, Prabhupada translates. प्रभुपाद ने यहाँ अनुवाद किया है So परम you पुरुषोत्तम get out of भगवान की Maya, प्राप्ति होगी। आप भगवान माया से बाहर आ You'll जाएंगे, develop in your devotional service, bhakti, to the process of bhakti, आप भक्ति की प्रक्रिया में विकास कर पाएंगे and you'll ultimately get spiritual perfection of Krishna Prema. और अंत में आपको आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होगी कृष्ण प्रेम की। Simply by hearing Krishna Mahaprabhu manifestation in the association of their pure devotee. सरलता से कृष्ण महाप्रभु को प्रकट जब होते हुए और शुद्ध भक्त के संग में हम उनसे श्रवण करके। Prabhupada said this verse is particularly applicable to the modern society because in the modern society they do not have any spiritual education. श्रील प्रभुपाद बताते हैं वर्तमान आधुनिक समय के लिए बहुत ही प्रासंगिक प्रक्रिया है क्योंकि वर्तमान समय में लोगों को किसी भी तरह का आध्यात्मिक No practically there's no education in spiritual matters, Prabhupada said. प्रभुपाद कहते हैं व्यवहारिक रूप से आध्यात्मिक में उनको कोई ज्ञान नहीं है।
And then you speak it and people are like, what is he talking about? और जब इसके बारे में हम बात करना शुरू करते हैं, लोग कहते हैं ये क्या बातें कर Or रहे I हैं? never heard this before. ये सब चीजें मैंने पहले कभी सुनी ही नहीं। So they may act like they're agnostics and they're philosophical and they're spiritual and they're pious, but actually there's no realized knowledge of really what is philosophy. तो वो ऐसा दिखावा कर सकते हैं कि वो बहुत सिद्धांतिक लोग हैं, या फिर वो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, विद्वान हैं और धार्मिक लोग हैं, पुण्य आत्मा है, लेकिन असल में उनको कोई साक्षात्कार प्राप्त किया हुआ ज्ञान नहीं होता। So that's why Prabhupada said, first you have to give up this idea of that to mental speculation, so-called philosophical speculation, that you can understand the nature of the absolute truth. इसलिए श्रील प्रभुपाद ने यहाँ कहा है सबसे पहले अपने उस मनोधर्म को त्याग करना होगा, यहाँ तक कि सैद्धांतिक रूप से जो मनोधर्म करते हैं उसको भी त्याग करना होगा परम सत्य को समझने के लिए। How many times do we talk about, right, not asserting yourself through this so-called intellectual mental speculation and stopping doing that, not allowing yourself to do that, otherwise you cannot do submissive all reception. तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह से आरोह पंथ से या फिर भगवान को अपनी बुद्धि से या अपने मनोधर्म से पहुंचने का प्रयास हमें ना करना चाहिए, ना हमें ऐसी अनुमति देनी चाहिए करने की। But if our pride and our arrogance is too much, then we'll not give up this idea that we can know everything and that we have the power of our intelligence, mind and senses to understand anything, even the absolute truth. तो अगर हम ऐसे मिथ्या अहंकार में, दंभ में रहेंगे और हमेशा इस तरह से अपने गुस्से में रहेंगे और हम अपनी बुद्धि और मनोधर्म का इस्तेमाल करेंगे परम सत्य को समझने के लिए और हम सोचेंगे हम सब कुछ समझ सकते हैं इस माध्यम से। Even we read the other day in Srimad Bhagavatam, those persons, they're not able to get the special mercy. यहाँ तक कि हमने श्रीमद् भागवतम में भी कुछ दिन पहले पढ़ा था, ऐसे व्यक्ति कृपा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। Those who really don't want to give up all this mental speculation and material consciousness and material activities, right? They cannot get special mercy. जो इस तरह का मनोधर्म छोड़ना नहीं चाहते, भौतिक गतिविधि, भौतिक कार्यकलाप नहीं छोड़ना चाहते, उनको ये कृपा प्राप्त नहीं हो पाता है। Therefore, all of this instruction is not meant for them. इसीलिए ये सारे निर्देश उन लोगों के लिए नहीं है। Because they don't know how to give up this addiction to the bodily platform of mental speculation. क्योंकि उनको ये पता नहीं है कैसे इस बुरी लत लगी हुई है शारीरिक स्तर पे, मन के स्तर पे मनोधर्म करने, Which is caused by pride and arrogance that we think we can understand it in that way. तो हम अपने मिथ्या अहंकार दंभ में हम ये समझते हैं अपनी बुद्धि से, अपनी क्षमता से हम सब कुछ समझ सकते हैं। So if one is very simple-hearted, अगर कोई बहुत सरल हृदय वाला है, pure-hearted, शुद्ध हृदय का है, Prabhupada calls them like a little bit innocent, प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं अगर वो थोड़ा नादान है, right? Prabhupada says here, if he's a good soul, प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं अगर वो एक अच्छी आत्मा है, even you don't know anything, हो सकता है आपको कोई ज्ञान ना हो, but if you're simple, you're a good soul, you have some innocence about you, some not so crooked individual, तो अगर आप बहुत सरल हैं, एक अच्छी आत्मा है, बहुत ज़्यादा कुटिल नहीं है और सरल व्यक्ति हैं, and you give up this pride and arrogance that we think we know everything and we can know everything by our own power and strength, और अगर आप अपने इस दम्भ को त्याग करते हैं कि मैं अपने स्वयं की शक्ति बुद्धि से सारी चीज़ों को समझ सकता हूँ, then there is a chance for advancement just by hearing. तो आपके पास मौका है कि आप विकास कर सकते हैं बस सरलता से श्रवण करके। So therefore, again, this hearing process is most important process. इसलिए दोबारा यहाँ बताया गया है कि श्रवण प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। And Lord Chaitanya Mahaprabhu, he preached this Krishna consciousness in the modern world. He gave great stress to this hearing, Shravanam. श्री चैतन्य महाप्रभु ने आधुनिक समाज के लोगों के लिए इसी चीज़ का प्रचार किया और इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है श्रवण की प्रक्रिया पे। Because if the common man simply hears from authoritative sources, क्योंकि अगर कोई सरल व्यक्ति किसी प्रशासनिक व्यक्ति से श्रवण करता है, he can progress. वो विकास कर सकता है। And especially through this hearing and chanting about Krishna, Krishna-katha, Krishna-naam, holy name, विशेष करके कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करके, हरि कथा, भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन करके। So Mahaprabhu made it very simple. महाप्रभु ने बहुत सरल, You don't have to even leave your position. यहाँ तक कि आपको अपना स्थान भी छोड़ने की Just जरूरत है। associate with Krishna as pure devotees, sincere devotees of Krishna, and try to hear about Krishna. बस कृष्ण के ईमानदार भक्तों के साथ संग कीजिए और कृष्ण के बारे में श्रवण करने का प्रयास Chant कीजिए। Hare Krishna. हरे कृष्ण If महामंत्र you don't जप कीजिए। associate with Krishna's devotees, you'll not hear and chant about Krishna. अगर आप
आप कृष्ण के भक्तों के साथ संग नहीं करेंगे तो आप कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन नहीं कर सकते। So if you really want to be devotee, अगर आप असल में भक्त बनना then चाहते you हैं must prioritize association of Krishna's simple-hearted, तो आपको अवश्य ये pure प्रार्थना devotees of Krishna. तो आपको ये अवश्य प्राथमिकता रखनी होगी कैसे कृष्ण के शुद्ध और सरल भक्तों के साथ संग कर सकें। And Prabhupada said, if you think you can be Krishna conscious outside of that association or on your own, you're living in a great phantasmagoria. प्रभुपाद कहते हैं अगर आप सोचते हैं आप कृष्ण भावनामृत हो सकते हैं बिना उस संग के और स्वयं के क्षमता के आधार पे, तो प्रभुपाद कहते हैं आप एक कल्पना की दुनिया में रह रहे हैं। So you think wherever you go and you're chanting and reading about Krishna, Krishna is manifesting that? आप सोचते हैं आप कहीं भी जाएंगे अकेले और जप करेंगे और पढ़ते रहेंगे वहाँ बैठ के तो कृष्ण वहाँ प्रकट हो जाएंगे। We're chanting Nama Parad, Nama Parad. हम नाम अपराध जप कर रहे हैं। Little to no faith, और श्रद्धा नाम मात्र की श्रद्धा heart है। filled with material attachment and material desire, हृदय पूरी तरह से भरा है भौतिक आसक्तियों से भौतिक इच्छाओं से, completely distracted, पूरी तरह से भटके हुए हैं, mechanically chanting. मशीन की तरह जप कर रहे हैं। The lips are like an engine just running, Hare Krishna, right? And we're gone, we're like somewhere else, और हमारे होठ जो है left the planet, हमारे होठ जो है इंजन की तरह चल रहे हैं मशीन की तरह, और हमारा मन जो है कहीं और ही इस ग्रह से बाहर जा चुका है, left the local vicinity. जो है स्थानीय जगह को छोड़ कर जा चुका है। What happened to that lady who was on the flights, on the plane of mental speculation? What happened to that plane? Is it been missing? उस Is it just flying there? The air traffic controllers, there's no last sighting of this flight? उन स्त्री का क्या हुआ जो मन के विमान में उड़ते रहती थी, कहाँ चली गई वो? She's sick. Huh? She's sick. Acha. You gotta come and try to get the medicine even if you're sick, right? तो हमें बीमार होने के बावजूद भी यहाँ आके औषधि लेनी चाहिए। Mentally or physically? शारीरिक रूप से या मानसिक स्तर पे, तो किस तरह से बीमार है? दोनों तरह से बीमार है वो। What are you complaining about? आप क्यों शिकायत कर रहे हैं? What's your complaint? आपका क्या शिकायत है? So this is requirement. तो ये आवश्यकता है। It's like a guy, you know how they have this, you know how they have like kidney problem, they have to go for this dialysis, right? You know what is that? They flush everything through that machine. ब्लड निकालना बॉडी से, लाइक आपको पता होगा कुछ लोगों को जो है अपने शरीर के अंदर से जो गंदगी निकालनी होती है, तो एक प्रक्रिया से, एक अन्य प्रक्रिया से शरीर के अंदर सारी गंदगी मशीन की सहायता से निकाला जाता है। So the kidney basically not getting the toxin out, is it like this, right? जैसे किडनी जो है हमारे शरीर से कुछ गंदगी निकालता है तो उसको अन्य किसी मदद से निकाला जाता है। If they don't get it out, they'll die. तो अगर उनके शरीर से वो गंदगी बाहर नहीं निकाली जाएगी तो वो मर जाएंगे। So every day, I think, right, they have to somehow take some vehicle. Sometimes they have like a special vehicle to drive, pick up all the old people or the sick people and drive them to that place to hook up to that machine. Seriously. Yes. तो आपने ये असल में एक ऐसी प्रक्रिया की जाती है कि एक हर दिन एक जो है गाड़ी निकलती है और उन सारे बीमार लोग या बूढ़े लोग हैं जिनको इस प्रक्रिया से मशीन के माध्यम से उनके शरीर की गंदगी बाहर निकालनी होती है, उनको अस्पताल ले जाया जाता है इस विशेष प्रक्रिया के The माध्यम से। toxins are too much, they'll die. क्योंकि उनके अंदर ये गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है शरीर में, Well, उनको they निकालने have की so जरूरत है। many plans. और उनके पास बहुत सारी योजनाएं हैं। I want to live in the mountains, I want to, travel. Okay, you can make all the plans you want, but if you don't find a place to daily go and hook up there, you're going to die. You know what I mean? Let's be practical here. और उन लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती है कि मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, पहाड़ों में रहूँगा, घूमने जाऊँगा, लेकिन अगर वो ये पता नहीं लगा पाए कि कैसे मैं अपने शरीर के गंदगी को कैसे इस मशीन की मदद से बाहर निकाल पाऊँ, तो अंत में वो मर जाएंगे और अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। It's the same spiritually. यही आध्यात्मिक रूप से भी काम Right? करता है। Asatsanga, material sound vibration, is like a poison. असत्संग भौतिक का शब्द ध्वनि एक तरह का जहर है हमारे। So if we don't find a way to purify that, तो अगर हम कोई तरीका नहीं ढूंढते हैं कैसे that हम इसको poison शुद्ध will कर सकते kill हैं, us. ये जहर हमें मार देगा। So our process to get rid of the toxins, right, is to chant Hare Krishna Mahamantra, hear about Krishna in association of devotees. तो हमारा प्रक्रिया है कैसे अपने अंदर की गंदगी को बाहर निकालना, भक्तों के साथ संग करना, उनके साथ बैठ के श्रवण कीर्तन करना कृष्ण के बारे में, And take Krishna Prasadam. और कृष्ण प्रसाद लेना। This is treatment program. ये उपचार कार्यक्रम है। So you can have all the plans you want. तो आप जितने भी चाहे योजना बना लें। You can have this amazing, year for year, goal after goal after goal plans on what you're going to try to achieve.
आप बहुत ही हो सकता है अद्भुत प्लान योजना बनाने का प्रयास करें, हर एक साल मैं किन किन लक्ष्यों को पूरा करूंगा, किन किन इच्छाओं को पूरा करूंगा। But if you don't have a place to go to regularly do this, what is it? Nityam Bhagavata Sevaya. लेकिन आप अगर ऐसी कोई जगह तलाश नहीं करते जहां आप निरंतर नित्यम भागवत सेवा नहीं And we कर don't पाएंगे, daily, regularly hear and chant about Krishna in association of Krishna's devotees, जहां हम प्रत्येक दिन निरंतर भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर सके उनके भक्तों के संग में, then we will die spiritually. तो हम आध्यात्मिक रूप से मर जाएंगे। And if we die spiritually, we will die materially as well. तो अगर हम आध्यात्मिक रूप से मर जाएंगे तो भौतिक रूप से तो हम मर ही जाएंगे। Because Krishna is not going to let his devotees die spiritually, and be successful materially. क्योंकि कृष्णा किसी भक्त अपने भक्तों को आध्यात्मिक रूप से मरने के बाद भौतिक रूप से सफल नहीं बनने देंगे। Maybe by your karma before you came to Krishna, your karma might say you're going to be rich or not. हो सकता है जब कृष्ण के पास You'll आप be नहीं आए, successful or not materially. हो सकता है कृष्ण के पास आने से पहले आपका कर्म ऐसा था कि आप सफल हो सके भौतिक रूप से, लेकिन कृष्ण के पास आने के बाद आपका ये कर्म खत्म हो जाएगा। But once you come to Krishna and you say, Krishna, I want to be your devotee, I want to surrender to you, I want to learn how to serve you. लेकिन एक बार जब आप कृष्ण के पास आ जाते हैं और कृष्ण कहते हैं मैं आपको शरणागत करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ कैसे आपकी सेवा करूँ, Then it says Krishna makes a vow तो ऐसा कहते हैं कृष्ण एक प्रतिज्ञा लेते हैं how to protect you कैसे आपकी रक्षा so करेंगे, that you can reach that spiritual goal. ताकि आप अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। Krishna says in Chaitanya Charitamrita, it's explained there. ऐसा चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कृष्ण ने If this स्वयं soul really wants me, कहा कि अगर कोई आत्मा असल में मुझे चाहता है, and Krishna acknowledges that your soul, you ask Krishna, I want you, I want to surrender to you, I want to serve you, I want to learn how to be bhakta, devotee. और अगर आप कहते हैं कृष्ण मैं आपको शरणागत करना चाहता हूँ, आपका भक्त बनना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ कैसे आपकी सेवा करूँ, Then Krishna takes a vow to protect you, to make sure your spiritual desire is fulfilled. तो कृष्ण वहाँ एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि आपका आध्यात्मिक इच्छा आपके लक्ष्य प्राप्ति हो सके। That means he'll protect you from materialism यानी कि वो आपकी रक्षा करेंगे भौतिकतावाद in से all of its subtle and gross forms, और सारे स्थूल या सूक्ष्म रूप से, which is all asat sanga. जो असत है, असत संग। So Krishna says there, it's explained that if they wanted me, why will I give them a situation where they'll get more and more contaminated, more and more forgetfulness and forget about me? Why will I make my devotee, give him that opportunity where he goes away from me? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं किसी भक्त को, अगर वो मेरे भक्त बनना चाहता है, मैं उसके साथ जीवन में ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न करूंगा जहां वो उस स्थिति में मुझे और ज़्यादा भूलता जाए और मुझसे अलग हो जाए। That's Krishna's protection. यही कृष्ण का रक्षण है। So you may think you can forget and not remember Krishna, and not want to serve Krishna in all of your plan making and making priorities, but Krishna didn't forget. लेकिन आप हो सकता है भूल जाएं कि आप कृष्ण को शरणागत नहीं करना चाहते हैं, उनकी योजना पे नहीं चलना चाहते हैं, लेकिन कृष्णा इस बात को नहीं भूले हैं। So do you really have faith that you're going to forget Krishna now and you're going to go chase materialism? तो क्या आप विश्वास करते हैं कि आप कृष्ण को भूल के पूरी तरह भौतिक चीजों के पीछे भाग पाएंगे अपने जीवन में? And you think Krishna is going to let that work? और क्या आप सोचते हैं कृष्णा वो सब चीजें काम करने देंगे आपके जीवन में? Where you forget Krishna more and more? जहां आप कृष्ण को और ज्यादा से ज्यादा भूलते जाएं? Not possible. संभव नहीं है। Now you know too much, अब right? आप थोड़ा ज्यादा जान चुके हैं। Right? It's like reading the contract and then you see the small print afterward, you know? जैसे आपने किसी जगह पे हस्ताक्षर कर दिया हो, लेकिन बाद में आप उसके नियम और शर्तें पढ़ रहे हैं। You know, by hearing this information, you are agreeing. इस प्रक्रिया, इस चीज को सुनने के बाद आप सहमत होते हैं इस बात से that Krishna will release you from your karma, कि कृष्ण आपके कर्म से आपको मुक्त कर देंगे and that you'll no longer be able to rely on your karma और आप अपने कर्म पे और ज्यादा निर्भर नहीं हो पाएंगे to try to advance yourself in your materialistic life. ताकि आप अपने भौतिक जीवन में विकास कर सकें। And that because Krishna took a vow to protect you, और क्योंकि कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा ली है कि वो आपका रक्षण करेंगे, that you're fully aware
जो आप पूरी तरह से जागरूक हैं that Krishna will never let you be successful materially. कि कृष्ण कभी भी आपको भौतिक रूप में सफल नहीं होने देंगे। No matter how strong is your plan or your desire. हो सकता है आप बहुत ही अच्छा योजना बनाएं, बहुत ही मजबूत योजना बनाएं। You didn't read that before you came? क्या आपने ये चीज़ नहीं पढ़ा था यहाँ आने से पहले? They didn't show you? क्या आपने किसी को दिखाया नहीं क्या ये चीज़ें? Oh, you got the chant, dance and be happy program. आप तो है कीर्तन करना, नाचना और प्रसाद लेने का प्रोग्राम है। Yes, Prabhupada said I had to trick you. प्रभुपाद ने कहा मुझे आप लोगों को थोड़ा ठगना पड़ा। Right? You know, it's like the blind man, right? It's like he looks at the contract, he doesn't even see the small print, you know? जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, उसने किसी चीज पे हस्ताक्षर किया और उसने जो है छोटे-छोटे नियम शर्तें वो तो देख भी नहीं पा रहा है उसमें क्या शर्त है। And then later when you're complaining, right, you say, look, you know, it's on the contract. You know? बाद में जब वो शिकायत करते हैं तो उनको बताया जा सकता है कि आपने You signed it, that's your signature. यहाँ आप अपने हस्ताक्षर किया है। Right? And then you're calling for like this magnifying glass, you know? और फिर आप जो है इस बड़ा करने Because वाले you can't believe शीशे को you बुलाते just हैं। signed up for this, you know? क्योंकि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं आपने कहाँ हस्ताक्षर कर दिया है। Mataji, this is what you're signing up for, right? माता जी आप इस चीज के अपने इस Are you ready? क्या आप तैयार हैं? We're giving you all the fine print up front. You're very fortunate. आप बहुत भाग्यशाली हैं, हम पहले ही सारे नियम शर्तें आपको बता दे रहे हैं। Now you're getting all the information of what's expected of you. अब आपको पहले ही सारी जानकारी दी जा रही है कि आपसे क्या उम्मीद है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Yes, you're very fortunate. You're getting everything up front before you make your decision. आप बहुत भाग्यवान हैं, आपको सारी चीजें शर्तें पहले ही बता दी जा रही है ताकि आप उससे पहले कोई फैसला ले सकें। Right? Some of us, we didn't have that opportunity. हम में से कुछ लोगों को तो ये मौका ही नहीं मिला। We got tricked. Krishna tricked us. Prabhupada tricked us. हमारे साथ तो छल हो गया, कृष्णा प्रभुपाद ने हमारे साथ छल कर दिया। Yes, come, chant, dance, take prasad, go back to Godhead. Wow, that sounds fantastic. आओ जप करो, कीर्तन करो, नाचो और प्रसाद लो और भगवत धाम वापस चले जाओ। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। Now we're here for so long, so many years. Now we got all the information. Now what do? You can't go back because you know too much. और इतने सारे सालों तक यहाँ रहने के बाद जब हमें बहुत सारी जानकारी मिल गई इसकी, तो अब हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि हम ज़्यादा जान चुके हैं। And then you're looking ahead and saying, "This isn't going to be easy." और जब आप आगे की तरफ देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ये आसान नहीं होने वाला रास्ता। So we're in like Tatastha region, you know. तो हम ऐसे तटस्थ स्थिति We're में आ like गए। Krishna. We're looking at Krishna. Then we're looking at Maya. हम एक बार Krishna, Maya, Krishna, Maya. हम एक बार कृष्णा की तरफ देख रहे हैं, माया की तरफ देख रहे हैं, कृष्णा माया। Hesitating. कभी-कभी झिझक रहे हैं, Some hesitation. कभी-कभी झिझकते हैं। And then we're like, you know, and then we're so crooked. We're like, how do I get out of this? You know. और हम इतने कुटिल हैं, हम सोचते हैं इस जगह से मैं बाहर कैसे निकलूं? You know, is there any way out? Instead of how do I advance, we're like, is there any way out of this? You know. ये सोचने के बजाय कि कैसे मैं विकास कर सकता हूँ, हम ये सोचने का प्रयास करते हैं कैसे मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। We're like looking for a loophole in the contract, you know, like maybe they didn't write it tight enough or something, you know. हम जो है बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, हमने जहाँ हस्ताक्षर किया है कहीं तो कोई कमी हो जाएगी जहाँ से हम बाहर निकल सकें। And of course, Krishna is the perfect advocate. और अवश्य कृष्णा जो है सबसे श्रेष्ठ वकील हैं। Right? He's the intelligence of all the lawyers and advocates put together. जो सारे वकीलों को एक साथ जमा कर देंगे, उनकी जितनी क्षमता है, बुद्धि है, All the कृष्णा अकेले Supreme उनके Courts in बराबर the है। world, put them all together. सारे जो उच्च न्यायालय और सर्वोत्तम न्यायालय है, सबको एक साथ The जमा कर देते, best कृष्णा and the अकेले उनके brightest. काफी हैं। सबसे श्रेष्ठ और सबसे चमकदार। And where are they getting their और intelligence? उनको सारी बुद्धि कहाँ से मिलती है? It's certainly not in the, you know, so-called schools and colleges. अवश्य ये नाम के विद्यालय और विश्वविद्यालय में नहीं मिलता है। That's another topic. ये There's दूसरा many विषय। ways we can go here. बहुत सारे Trying to रास्ते stay हैं focused. जहाँ हम जा सकते हैं, लेकिन हम एक जगह पे जाने का प्रयास करते Sometimes I get carried away. हैं। कभी-कभी हम थोड़ा भटक जाते हैं। We're trying to stay focused here. Are you focused? हम केंद्रित रहने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आप केंद्रित हैं? Are you enjoying this information? क्या आपको मजा आ रहा है इस जानकारी को पाकर? Prabhupada says you might as well make the best use of the bad bargain, you know. वो बात कहते हैं हमें जो चीज़ प्राप्त हुई है उसका हम किसी तरह से श्रेष्ठ करने का इस्तेमाल करें। So for materialistic person, this is like a bad bargain, you know. तो भौतिकतावादी लोगों के लिए किसी तरह से उनको एक बुरा प्रस्ताव है, बुरा सौदा हो गया। My Gurudev used to say, disappointed, disappointed. Now you're disappointed, you know.
मेरे गुरुदेव कहा करते थे निराश होना पड़ गया। Alas, disappointed. क्या करें, अब तो निराश हो गए। So now what to do? तो अब हम क्या करेंगे? This is the dilemma, isn't it? This is a serious dilemma. अब तो हमारे सामने गंभीर दुविधा आ चुकी है। And then the stakes are like life and death. और जो है खतरा जो है जीवन जन्म और मृत्यु का है। It's not like okay, you can lose something. No, it's life and death stakes. ऐसा नहीं कि आप कुछ चीजें खो देंगे, यहाँ जन्म और मृत्यु का सवाल आ And we're in a dilemma. और हम दुविधा में हैं। Because we can't go backwards, neither we have enough strength of desire to go forward. क्योंकि अब हम वापस नहीं जा सकते, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं, इतनी इच्छा नहीं है कि हम आगे जाना चाहते हैं। So we got a problem here, isn't it? This is a problem. हमारे सामने एक समस्या है। How do we understand it? How do we solve it? अब कैसे हम इसको समझेंगे, कैसे इसका समाधान करेंगे? Right? Now Krishna says you need a higher taste to get rid of the lower taste. और कृष्ण कहते हैं आपको ऊंचा स्वाद पाने की जरूरत है ताकि आप नीचे के स्वाद को छोड़ सकें। And we're not even convinced we wanted to let go of the lower taste. और हम अभी तक इस बात पे भी आश्वस्त नहीं हुए कि हम नीचे के स्वाद को छोड़ना चाहते हैं। What to speak of chasing a higher taste? We didn't even figure out you should give up the lower taste. तो ऊंचे स्वाद के पीछे क्या भागना, जब अभी तक हम ये भी पता नहीं लगा पाए कि नीचे के स्वाद को कैसे छोड़ना है। That's a problem. तो ये समस्या है। And I'm laughing about it, which makes it aggravating, you know. और मैं इस पे हंस रहा हूँ, तो ये आप लोगों को और ज्यादा भड़का रहा है। Maharaj, I'm here to make you happy. माता जी, मैं यहाँ आपको खुश करने के लिए हूँ। If we become devotee of Krishna, we'll become happy. अगर हम कृष्ण के भक्त बनते हैं तो हम खुश हो जाएंगे। It's like somebody wants to marry the guy, he has to go for this dialysis every day, you know, and the guy has to tell the wife, okay, I'll marry you, but I have to go to this place every day to get the dialysis, you know. So this is my need to survive. So if you understand that and you support me for that, then possible. तो ये ऐसा है जैसे कोई स्त्री किसी पुरुष से विवाह करना चाहती है और पुरुष के पास ये समस्या है कि उसको हर दिन प्रत्येक दिन अपना डायलिसिस कराना पड़ता है अपने शरीर से वो गंदगी बाहर निकालने के लिए। तो वो कहते हैं अगर आप इस बात को समझती हैं और मेरा सहयोग करेंगे उसमें, तो ये संभव है कि हम शादी कर सकते हैं। So we're like handicapped people. तो हम ऐसे जो है अपाहिज व्यक्ति हैं। We're needy people. हम जरूरतमंद लोग हैं। We need Krishna. हमें कृष्ण की जरूरत है। If we don't get Krishna, we're going to go mad. अगर हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे तो हम पागल हो सकते हैं। So if you can help me to get Krishna, तो अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं कैसे मैं and support me to get plugged in to get rid of all of the toxins on a daily basis, और मेरी मदद कर पाए कि मैं अपने अंदर की गंदगी सारे and you'll drive the car and truck for me to bring me there, और अगर आप मेरे लिए वो गाड़ी चलाएंगे ताकि मुझे हर दिन वहां आप लेके जा सके, then possible. तो संभव है। Am I answering your question? क्या आपके सवालों का जवाब मिल रहा है? Your doubt is it getting cleared out? क्या आपके I told you संदेह many थोड़े things साफ are going हो to रहे get हैं? cleared out. मैंने आपको कहा था बहुत सारी चीजें Because we have so many questions, क्योंकि हमारे बहुत सारे we सवाल have हैं, so many doubts, बहुत सारे we संदेह have to make so many big आपको decisions, बहुत सारे बड़े-बड़े फैसले लेने हैं, but we're deaf, dumb, and blind. लेकिन हम अंधे गूंगे बहरे हैं। We need some better information, हमें कुछ बेहतर जानकारी की जरूरत है। not speculative. Speculative means mistake. और मनोधर्म नहीं, मनोधर्म का मतलब ही हम गलती करेंगे। We need absolute answer, a perfect answer. परम सत्य परम उत्तर चाहिए। But are we asking Krishna for perfect answer? लेकिन क्या हम कृष्ण को पूछ रहे हैं कि वो हमें पूर्ण उत्तर दे? Or we're telling Krishna, you just fulfill what my plan is. You answer my question the way I want it answered, then I'll be devoted. और या फिर हम कृष्ण को कह रहे हैं आप मेरी इच्छाओं को पूरा कीजिए, मेरी योजनाओं को पूरा कीजिए और मेरे सवालों को उत्तर उस तरीके से दीजिए जिस तरह से मैं चाहता हूँ मेरे समय We के have it अनुसार। backwards. हम इसको जो है उल्टे तरीके से कर रहे हैं। Does anyone have questions so far? क्या किसी कोई सवाल है अब तक? We're just starting. You think this is over? हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, आपको क्या लगा सब खत्म Now हो you गया? guys are sweating. Now we're getting somewhere, you know? अब आप लोगों को पसीने छूट रहे हैं, अब हम कहीं धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। Before you're like everything's cool. Now you're like sweating. You're like, oh my God, this is like I feel like I'm in a frying pan now. पहले सब कुछ Yeah, we ठंडा just था, turned up the heat, man. पहले बहुत सब कुछ ठंडा था और अब जो है धीरे-धीरे गर्मी बढ़ रही है, हमारे पसीने Yeah, छूट we रहे हैं। just put the हम ghee on the
on the frying pan. हम ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे हम जलते तवे में और जो है गर्मी और बढ़ा रहे हैं उसके ऊपर घी और डाल रहे Yeah, हैं. it feels great, doesn't it? अच्छा लग रहा है या नहीं? What else can we find here? It's very interesting what's in the Bhagavad Gita. और क्या हम ढूंढ सकते हैं? भगवद गीता में तो बहुत अच्छी It's अच्छी चीजें हैं. amazing what's actually there. बहुत अद्भुत चीजें हैं. It's क्या क्या है? unlimitedly deep. ये असीमित रूप से गहरा है. If one is fortunate enough to take shelter of a pure devotee and hear from him, अगर कोई भाग्यवान होता है, अगर वो शुद्ध भक्त का आश्रय लेकर उनसे श्रवण कर पाता है about these topics of self-realization, आत्म साक्षात्कार के विषयों में, and we follow in his footsteps, follow his instructions, और अगर हम उनके चरण कदमों का पालन करते हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हैं, one will gradually be elevated to the position of a pure devotee. कोई धीरे-धीरे जो है शुद्ध भक्त के स्तर पर ऊपर उठ सकता है. So in other place, Prabhupada says all the four, Krishna says the four types of people that come to me. और दूसरी जगह पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं जो चार तरह के लोग मुझ तक आते हैं, भगवान ऐसा बताते Some हैं. they want the money, कुछ लोग पैसे चाहते हैं, husband, wife, पति, some materialistic पत्नी, thing. किसी तरह की भौतिक वस्तु चाहते They हैं. go to God, they pray to God. वो भगवान के पास जाते हैं, भगवान से Right? प्रार्थना Or a करते हैं. suffering condition, we can tolerate it. They, Yeah. if they're pious, they'll go to pray to God. अगर हम बहुत दुख में परिस्थिति में होते हैं, हम उसको सहन नहीं कर पाते और तो अगर वो पुण्य आत्मा होते हैं, वो भगवान के पास जाते हैं. So even you have gross, subtle desires, but if you're pious, if you're a good soul, if you're a good boy and girl, you'll go to God and pray. You'll go to Krishna and pray. हो सकता है आपके अंदर भौतिक इच्छाएं हो, भौतिक आसक्ति हो, लेकिन अगर आप अच्छे लड़के हैं, अच्छी लड़की हैं, अच्छी आत्मा है, तो आप पुण्य आत्मा है, आप भगवान के पास जाएं. And how Krishna helps us is Krishna sends his representative bona fide guru. और कृष्ण हमारी मदद कैसे करते हैं? वो हमारे पास प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं. Just like with Dhruva Maharaj, he had material desire. जैसे ध्रुव महाराज, उनकी भौतिक इच्छाएं थी. He going to find the Lord. He's going to pray to the Lord. वो भगवान को ढूंढने जा रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे. And then Krishna just sent Narada Muni, spiritual master, right on the path that he was walking. और कृष्ण ने नारद मुनि को उनके उसी रास्ते पे भेज दिया जिस रास्ते पे वो आगे बढ़ रहे थे. Sometimes Krishna send the guru to you, कभी-कभी कृष्ण गुरु and आपके पास sometimes भेजेंगे. somehow you'll go to the guru, but it's Krishna's arrangement. और कभी-कभी किसी तरह से आप गुरु के पास जाएंगे, तो ये कृष्ण की व्यवस्था होगी. And then his guru, Gurudev, he said, okay, how serious is this person? और फिर गुरुदेव देखेंगे ये व्यक्ति कितना गंभीर है. Right? Will he follow what I'm asking? क्या ये उसका पालन करेगा जो मैं इससे पूछ रहा हूँ? Then he said, okay, he's very serious, very determined. तो उन्होंने देखा ये बहुत गंभीर है, बहुत दृढ़ निश्चय. And then he got instructions from his guru. तो उनको उनके गुरु से निर्देश प्राप्त हुआ. Ultimately, he gave him Krishna, mantra, this Vishnu, mantra Krishna, अंत में उन्होंने कृष्णा मंत्र प्राप्त किया अपने गुरु से. Vaishnava mantra. वैष्णव मंत्र, That's non-different from Krishna. जो कृष्णा से अभिन्न है. So he had material desire. तो उनके पास भौतिक इच्छाएं थी. But because he's associating and hearing from pure devotee of Krishna, लेकिन क्योंकि वो संग कर रहा है, उसके शुद्ध भक्त से श्रवण and कर he's रहा है, chanting Krishna mantra, which is non-different from Krishna, और वो कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं जो कृष्णा से अभिन्न है, then he got purified of all of his material desires, material contamination, तो वो उन सारे भौतिक कलमश, भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो गए and became pure devotee. और शुद्ध भक्त बन गए. So Prabhupada said, even if you have other material desires, gross and subtle, if you associate with Krishna's devotee and you chant Hare Krishna Mahamantra and you hear about Krishna, take prasadam, gradually you will become pure devotee. श्री प्रभुपाद ने यहाँ तक कहा है, अगर आपके पास बहुत सारी भौतिक इच्छाएं, भौतिक आसक्ति भी हैं, फिर भी आप किसी वजह से अगर भगवान के शुद्ध भक्त के आश्रय में आते हैं, उनसे श्रवण कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, प्रसाद लेते हैं, हरि कथा श्रवण करते हैं, तो आप धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकते हैं. So some of us saying, that'd be nice, become pure devotee. तो किसी ने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ कि शुद्ध भक्त बन We're जाओ. saying from the lips, तो आप होठों से कहते हैं, and then we're practically being dragged और हमें असल में तो है घसीट के ले जाना पड़ेगा, because we're like kicking and screaming. क्योंकि हम अपने हाथ पैर पीट रहे हैं. Right? We're saying, yes, I want to be pure devotee, and then we're not cooperating with anything, and then we're being forced, right? And then Krishna's saying, anyway, either way, right? We're going to make you a pure devotee. तो आप कहते हैं आप शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, लेकिन ना तो आप सहयोग कर रहे हैं, आप हाथ पैर पीट रहे हैं और आपको असल में मजबूर करना पड़ रहा है. लेकिन कृष्ण कहते हैं या तो एक तरीके से या दूसरे तरीके से हम आपको शुद्ध भक्त बना के रहेंगे.
One time I was complaining to Gurudev that the former wife, you know, she wasn't cooperating so nicely. एक बार मैं अपने गुरुदेव से शिकायत कर रहा था कि मेरी पूर्व पत्नी जो है मेरे साथ अच्छे से सहयोग नहीं कर रही थी. She was not showing enthusiasm for bhakti. वो जो है भक्ति के तरफ अपना उत्साह नहीं Not दिखा so रही थी. interested for spiritual life. और उनको आध्यात्मिक जीवन में ज़्यादा रुचि नहीं थी. And Gurudev told me, just drag her. और गुरुदेव ने कहा बस उनको घसीटो. Now, women liberation people, they may not like that. तो हो सकता है जो स्त्री स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों को ये सब बातें पसंद So all the women liberation people, they hate me. तो ये सब They really do. सारी जो स्त्री की आज़ादी की जो बात You'll करते हैं never तो वो मुझे see नफरत करते हैं. strong women liberation people coming and staying in my class. It's impossible. आप कभी ऐसा नहीं देख सकते जो स्त्री की स्वतंत्रता की बात करता हो वो व्यक्ति आए और कभी मेरे क्लास में बैठ सके. ये संभव नहीं होगा. You know, or mothers who are coming and they're forcing their children to worship them instead of Krishna, they cannot come to this class. या फिर वो स्त्रियां जो अपने माताएं जो हैं अपने बच्चों से चाहती हैं वो कृष्णा की पूजा करने के बजाय उनकी पूजा करें, वो भी यहाँ पे नहीं बैठ सकते. You cannot compete with the guru. आप You know, गुरु के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकते. so they'll not come. तो वो नहीं आएंगे. But anyway, the point is, even you have material desires, लेकिन बात ये है कि अगर हो सकता है आपके पास बहुत ही इच्छाएं भी हों, or even no desire, यहाँ तक कि कोई इच्छा ना हो, or even you want liberation, या फिर यहाँ तक कि आप मुक्ति चाहते हो, if you hear and chant about Krishna, you'll become pure devotee. अगर आप कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करेंगे आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे. Isn't that nice? क्या ये अच्छा नहीं? Doesn't mean you don't have to do anything, and yeah, Gurudev just going to drag me. Don't think like that. इसका मतलब ये मत सोचिए कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है और गुरुदेव बस मुझे घसीट के लेके जाएंगे. I can see it now, you know. अब मैं देख पा रहा हूँ. Yes, Gurudev is going to do everything, you know. We don't have to do anything. और मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. There's like a Jesus Christ philosophy, you know. ये जीसस क्राइस्ट के सिद्धांत के जैसा They होगा. have this understanding, right? Like you can do any damn thing, right? But Jesus is going to save us, you know. उनकी ये कहावत है कि हम कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमें जीसस हमें बचाएंगे यहाँ से. Wow, what a great guy, you know. He died on the cross for our sins, you know, just to make sure we get liberated. What a guy, you know. He's fantastic, you know. But I'll do any damn thing, you know. और क्या आदमी है तो हमारे पापों को झेल के ये खुद ही सूली पे चढ़ गए तो ये कितना महान व्यक्ति है ये. He sacrificed on the cross, right? And just to free us from our sins. And we're like, wow, he's a fantastic guy, you know. Not many people will do that for you, you know. ये सूली पे चढ़ गए हमारे पापों का फल भोगने के लिए. बहुत सारे ऐसे लोग नहीं है जो हमारे पापों का फल भोगने के लिए स्वयं के जान देते हैं. So don't think, okay, we don't have to do anything and Gurudev is going to do everything. तो ये मत सोचिए कि हम कुछ भी नहीं करेंगे और गुरुदेव ही सब कुछ करेंगे. So we have to agree. तो हमें भी सहमत होना होगा. And we have to try our level best, no matter what is the circumstance. और हमें अपना श्रेष्ठ करने का प्रयास करना होगा. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसी परिस्थितियां हैं. And that'll certainly be tested endlessly. और हमें जो है असीमित रूप से हमारी परीक्षा ली. And as you go, the tests will get heavier, more complicated, more difficult to pass also. और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे परीक्षा और ज़्यादा भारी हो जाएगी और ज़्यादा जटिल हो जाएगी और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ेगी उसको पास करने के लिए. Would you want a 3rd grade exam? तो कैसा आपको When तृतीय you're श्रेणी in का the परीक्षा PhD चाहिए? level? जब आप PhD के स्तर पे आ गए तो आप क्या तीसरे कक्षा के 1 plus स्तर 1 पे जाएंगे? equals 3, you know. 1 और 1 3 होता है. You're expecting this type of test? क्या इस तरह का परीक्षा आपसे लिया जाएगा? So, are we getting there? क्या हम Is things becoming more and more clear? तो चीजें धीरे धीरे और साफ होती जा रही हैं. In this verse particularly, the process of hearing is being strongly recommended. It's everywhere. और विशेष करके इस श्लोक में श्रवण की प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया जा रहा है. असल में ये सभी जगह बताया गया है. I remember one of my godbrothers, he's like, you know, why are you always talking about hearing? You मुझे याद है know? मेरा एक गुरु भाई अक्सर कहा करता था क्यों आप हमेशा श्रवण के बारे में बात करते Chanting is more important. हैं कि जप करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है. You should just be always talking about chanting. Why are you always talking about hearing? हमें हमेशा जप के बारे में बात करना चाहिए. आप हमेशा श्रवण के बारे में क्यों बात करते But हैं? why is it shravanam, kirtanam? लेकिन क्यों पहले श्रवण उसके बाद कीर्तन? That means first the hearing has to be perfected. क्योंकि पहले हमें श्रवण को सिद्धि प्राप्त करनी To होगी purify the consciousness, to give us faith, ताकि हम शुद्ध हो सकें, हमारी चेतना को शुद्ध कर सकें और श्रद्धा पा सकें. so that we'll pray and chant for a spiritual motivation. ताकि हम प्रार्थना करें और जप करें एक आध्यात्मिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए.
That's why it's said that this hearing, Shravanam, is first most important aspect of devotional service. इसलिए ऐसा कहा जाता है ये श्रवणम भक्ति का सबसे पहला और प्रमुख महत्वपूर्ण भाग है. And without doing that nicely, you cannot do any other ninefold processes of bhakti. और बिना इसको सही तरीके से किए हम नवधा भक्ति के किसी भी अन्य कार्य को नहीं कर सकते सही तरीके से. It's like, you know, it's like this example about the dialysis, right? जैसे अभी हम उदाहरण दे रहे थे डायलिसिस का अंदर के कचरे को बाहर निकालना. You have all these toxins, like the clock is ticking, you know, if you don't get this toxin out of you, you know. और आपका जो घड़ी घूम रही है, जब आप अपने अंदर से ये गंदगी अगर बाहर नहीं निकालेंगे, it's like a priority, you know. Life and death means priority, right? तो जन्म मृत्यु का सवाल है, तो ये आपके जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता है. And then you're going and getting your nails done. तो फिर क्या आप जाएंगे अपने नाखून You know, getting your hair done. अपने बाल बनवा रहे हैं कहीं जाके. Right? Going for a massage. कहीं मसाज करवाने जा रहे हैं. Right? You're doing all of these things, right? But the clock is ticking, isn't it? You can do all of those things. तो ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी घड़ी घूम रही है. But if you don't do this first, you're gonna die. लेकिन अगर आप ये चीज पहले नहीं करेंगे, तो आप मरने वाले हैं. And we're so foolish. We'll be like, well, if I'm in the box, everyone will see how beautiful my nails are. और हम इतने बेवकूफ़ हैं, हम ये सोचते हैं अगर हम अपने कफन में लेटे रहेंगे तो सब लोग देख पाएंगे मेरे नाखून कितने सुंदर थे. Right? What a way! Even if you die, then people say, "Wow, this is like ladies, right?" They say, "Okay, let me see, how is her nails?" You know. वो यहाँ तक कि ये भी सोचते हैं अगर मैं मर जाऊँगी, स्पेशली अगर वो स्त्री है, तो मेरे नाखून कितने सुंदर दिखेंगे मेरे मरने के बाद भी. Right. They'll go up to you and they'll say, well, "Let me see her shoes," you know. What kind of shoes is she wearing, you know? It's like clown's feet, you know? It's like, okay, she's not competition, you know? जैसे जब वो कफन पे भी लेटी हो, कुछ लोग आकर देखेंगे, कहेंगे, ओ इन्होंने किस तरह के जूते पहने थे मरने से. She's not a competition. और देखेंगे, ओ मेरे साथ. So we're so superficial. तो ये इतना बनावटी है. Right? We're busy doing all of these things, running here, and what are you doing? I'm just busy, you know? You're running here, go to the store, go to the bank, you know, go see your grandmother, you know, go to the sporting event. We're busy. तो इस तरह से हम दिन भर व्यस्त हैं. कभी दुकान में जा रहे हैं, कभी कहीं घूमने जा रहे हैं, कभी कुछ खेल कूद करने जा रहे हैं, कभी दादी को देखने के लिए जा रहे हैं. इस तरह से हम दिन भर व्यस्त हैं अलग-अलग. But if you don't go for the dialysis machine, you're going to die. लेकिन अगर आप वहाँ डायलिसिस करने नहीं जाते हैं, आप कुछ समय के बाद मरने वाले हैं. That's priority. ये प्राथमिकता है. So without association, hearing and chanting means spiritual death. और अगर हम श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे सही संग में, मतलब आध्यात्मिक रूप से हमारी मृत्यु हो जाएगी. So you're trying to figure out what you should do with my life. तो अगर आप ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं मुझे अपने जीवन के साथ क्या Should करना I है, live here? Should I live there? या मुझे यहाँ रहना चाहिए या मुझे Should वहाँ I रहना be चाहिए, married or not या married? मुझे विवाह करना चाहिए, Should मुझे I विवाह do नहीं this करना चाहिए, job or that job? क्या मुझे ये काम नौकरी करनी चाहिए या दूसरी नौकरी करनी We're चाहिए. busy with all of these considerations. हम इन सारे विचारों से बहुत व्यस्त हैं. But you didn't get an apartment near the dialysis machine where that's available. लेकिन अगर आपने अपना घर उस डायलिसिस की जो केंद्र है उसके नज़दीक में अपना घर नहीं लिया है, So you didn't build into your plan this requirement, which is life and death requirement spiritually. तो आपने ऐसी योजना नहीं बनाई है जो असल में आपके जन्म मृत्यु का सवाल है, आध्यात्मिक रूप से आपके जन्म मृत्यु का सवाल है. I'm done. I said everything. तो मैंने सब कुछ कह दिया, मेरा काम पूरा हो चुका. You know, it's like drop the mic, right? Drop the mic moment. इसका मतलब है कि आप बोलती बंद कर दो. Oh, said it all. हो गया सब कुछ. Nothing left. अब कुछ भी बाकी नहीं रहा. What's your problem? आपकी समस्या क्या है? Do you like it? Do you like the conversation? क्या आपको पसंद आ रही है हमारी बातचीत? Krishna has the final say. कृष्ण है जो अंतिम में कहेंगे. It says he's the final factor of action. यहाँ तक ये भी कहा जाता है सभी कार्यों का अंतिम व्यक्ति कृष्ण है. He's the ultimate sanctioning authority. वही अंततः सभी चीजों की कार्यों की अनुमति देते हैं. So we think we can do something without considering the ultimate sanctioning authority? Is this what we're really thinking? तो क्या हम सोचते हैं जो उसके पास सबसे अंतिम हक है, किसी भी चीज अनुमति है, किसी भी चीज सफलता, किसी कार्य की सफलता के लिए उनके विचार, इस बात को विचार किए बिना हम सफल हो सकते हैं? Just by wishful thinking? बस कल्पनात्मक रूप से सोचकर Everything is going to be perfectly settled?
क्या सब कुछ सही तरीके से स्थित हो जाएगा? Is that the plan? क्या ये हमारी योजना है? Any questions? कोई सवाल? We still have 1 more hour. हमारे पास अभी भी 1 घंटा है. I'm not letting you go that easy. मैं आप लोग इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा. Yeah, sometimes the teacher, he keeps you longer, you know. ये अच्छा होता है जब वो आपको ज़्यादा देर तक रखे. Right? Students want to run out, you know, they have some other thing to do, you know. जब जो है शिष्य जो है बाहर भागना चाहते हैं, कुछ अन्य चीज़ करना चाहते हैं. But sometimes the teacher's fired up, he feel like teaching today, you know. लेकिन कभी-कभी शिक्षक जो है बहुत जोश में होते हैं और वो चाहते हैं कि मैं सब कुछ सिखा के रहूँगा. Put away your clock, put away your watch, put away your phone. अपना घड़ी, अपना फोन सब कुछ साइड में रख दो. Right? Put away your plans. आपकी सारी योजना बगल में रख दो. It's going to be a long night. आज बहुत लंबी रात होने वाली है. Sometimes you go to work or whatever, right? And they say, okay, we got all these problems, you know, this is going to be a long night, man. They're giving you like a warning, you know. कई बार हम काम पे जाते हैं तो वहाँ पे हम बताया जाता है कि आज हमारे पास बहुत सारी समस्या है, आज की रात बहुत लंबी होने वाली है. Right? So many crises is happening, emergencies happening, you know. बहुत सारा आपातकाल हो गया, बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ all the servers shut down, all the whatever the problem is, right? बहुत सारी सेवाएं बंद हो चुकी हैं, बहुत सारी सेवा और ये हमारी समस्या आ चुकी है. We got a problem. It's going to be a long night. हमारे पास समस्या है, हमारी रात बहुत लंबी होने वाली है. We're trying to figure out how to get out of Maya and get Krishna Bhakti. And we're going to solve it tonight, actually. We're going to solve it tonight. हम ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कैसे हम माया से बाहर आ सकते हैं और कैसे हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं. कृष्ण भक्ति. Crystal clear. आज ही रात हम पता लगाएंगे पूरे शीशे की तरह साफ. You'll be completely free of mental speculation at the end of this night. और आज रात के अंत तक हम जो है पूरी तरह से मनोधर्म से मुक्त हो जाएंगे. And sometimes the teacher says, until everyone in the class learns this, you cannot leave. और कभी-कभी शिक्षक ये भी कहते हैं कि क्लास का अगर सारा छात्र अगर इस बात को ना सीख जाए तब तक ये क्लास खत्म नहीं होगा. And then everyone's looking around for, like, you know, the dumb guy, you know. Like, we got to make sure this guy gets this information, you know. We got to pump him with this information. क्लास के सारे बच्चे जो है क्लास के सबसे बेवकूफ बच्चे की तरफ देख रहे होते हैं कि हम ये बात सुनिश्चित कर ले कम से कम ये बेवकूफ जो है सारी जानकारी अच्छे से समझ जाए ताकि हम लोग बच सके. Right? And they like 3-4 guys around the guy's desk, you know, do you understand this? You got to understand this tonight, otherwise none of us can go. और आप देखेंगे वो 4-5 बच्चे जो है उस बच्चे के डेस्क के आसपास हमेशा रहेंगे, उसको समझाते रहेंगे क्या तुम समझ रहे हो और तुम नहीं समझे तो हम सब में से कोई आज रात घर नहीं जा पाएगा. Sometimes you go in the meeting, right, the secret place, they say, okay, everybody's cell phone, right? So you go to the Guru's class and you say, okay, watch, cell phones, right? Anything that's distracting you, you know, throw it in the box, you know, we'll give it back to you at the end of the class, you know what I mean? जैसे कभी-कभी कुछ मीटिंग होता है आपको सारे आपके फ़ोन, आपकी घड़ी सब कुछ जमा कर लिया जाता है पहले. उसी तरह गुरु के जब पास आते हैं ये सब सारा फ़ोन और घड़ी आपकी जमा कर ली गई और आपको क्लास के अंत में ये सब वापस लौटा दी जाएगी. It's easier to take out a lung than to give up the cell phone, you know what I mean? You can have my lung, but you can't have my iPhone, you know? और अभी तो है लोग अपना फ़ोन फेफड़ा दे सकते हैं लेकिन अपना फ़ोन नहीं दे सकते. आप मेरा फेफड़ा ले लीजिए, मैं अपना आईफोन नहीं दे सकता. I'll give you my first kid. मैं अपना पहला बच्चा आपको दे दूंगा लेकिन फ़ोन नहीं दूंगा. But don't touch my iPhone. Don't touch my new phone. लेकिन मेरे नए फ़ोन, मेरे नए आईफोन को छुओ मत. Like we put it on like a nice. It's like you're supposed to do it with the deities, right? Where like we get a nice cloth, you know, put the phone there, right? It's like you're worshiping the phone instead of the deity, you know. हमें तो ये सब चीज़ें विग्रह के साथ करनी चाहिए, भगवान के विग्रह के साथ. लेकिन हम लोग ये जो है फ़ोन के साथ करते हैं. नया कपड़ा लेके आते हैं फ़ोन को, उसके वहाँ रखते हैं अच्छे से कपड़े में. Are you comfortable? क्या तुम ठीक हो? Charge yourself up. अपने आप को Get ready. We got a big day tomorrow. कल हमारा बहुत बड़ा दिन होने वाला है. चार्ज हो जाओ. Have a good night's rest. I'll see you soon. अच्छे से आराम करो. मैं बहुत जल्द आपसे मिलूँगा. All right. Anything else? How else can I help you? कोई और या किसी और तरीके से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. I'm not going anywhere. मैं कहीं नहीं जाने वाला आज.
Yeah? Such power in your presentation, man. It's like overwhelming power coming from this guy, isn't it? इस व्यक्ति से हमेशा कुछ अद्भुत करने वाली शक्ति आती है। इसकी प्रस्तुति में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति इनके पास कहाँ से आती है? It's like some flower, you know, like just drifting, you know. जैसे कोई से फूल गिर रहे हों, ऐसे इनकी प्रस्तुति होती है, हवा में उड़ रही है। It's just like, you know, eventually it's like coming to me, you know. It's like a flower. ऐसा लगता है soft flower. कोई उड़ता हुआ, तैरता हुआ, हवा में तैरता हुआ फूल मेरे तरफ उड़ कर आ रहा है, इस तरह से। Not like a thunderbolt, you know, not like powerful. It's like इसे बिजली की तरह मजबूत कड़कदार नहीं आता है, वो किसी फूल की तरह हल्का फुल्का उड़ता हुआ। Some bumblebees are like flying around it. It's like और कुछ भौरे उस फूल के चारों तरफ मंडरा रहे होते हैं। some birds are chirping, you know. और कुछ चिड़ियाँ चहचहा रही Eventually होती हैं। this vibration is hitting me, you know. और सुनिश्चित करती हैं कि ये जो शब्द ध्वनि है मुझ तक पहुँच पाए। Somehow that's what I was seeing, you know. किसी तरह से मैं ये I'm not taking drugs, don't misunderstand. मैं कुछ नशा नहीं करता हूँ, मुझे गलत मत This is समझिएगा। natural realization, ये मेरा स्वाभाविक साक्षात्कार है, I hope. मुझे उम्मीद है। Actually from childhood. Oh, you're getting stronger, I like that. He already got stronger. अच्छा, पहले ही मजबूत हो गए आप तो। Progress already. पहले से शुरुआत हो गई है अब इनकी। From childhood, I see that I was little softer, and but in the middle age we become little bit callous and little harder in the heart. So I wanted to know, like, how can we cry when the heart is very hard and it has covered a lot of layers to protect it. So, and in Krishna consciousness, we see that we should be very soft and tender. You need, you know what is a Moab? Moab, M-O-A-B. आपको पता है मोआब क्या होता है? M-O-A-B. It's called mother of all bombs. आपको सारे बम की माँ चाहिए। A Moab. So this has become so thick layer of hardness. We need a Moab. We need the mother of all bombs to just crash through it, break it off. क्योंकि आपके हृदय के ऊपर इतने कठोर परत बन चुके हैं, अब हमें जो है सारे बमों की माँ चाहिए जो सारे इसको पूरी तरह उड़ा दे इसको। Right, so Guru and Krishna, they're trying to find where to send the bomb, right? And we're like hiding behind, you know, the trees and the you know, my mother's, you know, her sari, right? He's behind mother's sari, you know, and then the satellite's trying to find out where is that guy, you know? Right? They want to drop the bomb, you know. He's hiding behind his mother's sari. She's promising him, you know, I'll cook for you tonight if you can withstand this Moab, you know. तो गुरु कृष्णा जो है पता लगा रहे हैं कैसे मैं इसके ऊपर ये बम गिरा सकता हूँ, और बच्चा जो है किसी तरह साड़ी के पीछे, माँ की साड़ी के पीछे छुपने का प्रयास कर रहा है, और माँ ये वादा कर रही है अगर तुम इससे गुजर जाओगे आज रात तो मैं आपके लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। Well, it's like, you know, this, you know, the guys who train the dog, and then they show up with like this uniform on. It's all just padding, you know. या फिर वो व्यक्ति जो लोग जो है कुत्तों को प्रशिक्षण देते हैं और फिर वो अपने कुछ तरह विशेष तरह के वस्त्र पहन के आते हैं जो पूरी तरह सभी तरह से भरा हुआ होता है, गद्दीदार होता है। And they have this helmet on, and they have the gloves and like really thick layer, you know, to train the attack dog, right? तो वो जो है पूरे हेलमेट पहन के आते हैं और ऐसे गद्देदार कपड़े, मोटे गद्दे वाले कपड़े पहन के आते हैं क्योंकि वो कुत्तों को प्रशिक्षण दे रहे होते हैं जो। So the guru, he's like a dog. तो गुरु जो है इस कुत्ते के जैसे He's the dog of his spiritual master. वो अपने आध्यात्मिक गुरु के कुत्ते हैं। And he understands the mission of the spiritual master. और वो अपने आध्यात्मिक गुरु के लक्ष्य को भी समझते हैं। So he's coming to like get rid of all of this thing, you know, and we're showing up for the class with this uniform on, like, okay, you know, I want to make sure I don't get hurt in this class, you know. और गुरु जो है जो इस कुत्ते की तरह सब कुछ नोच के बाहर निकाल देना चाहते हैं, और हम जब क्लास में आते हैं इस तरह गद्दीदार कपड़े सब तरह पहन के आते हैं ताकि कुछ भी हमारे ऊपर से नोच के बाहर ना निकाली जाए। I'm in the class, मैं क्लास में आया हूँ, but we're sitting in these big suits, you know. लेकिन हम इस बड़े जो है कपड़े पहन कर आए हुए मोटे And कपड़े। we're like, I think I'm hearing something. कहते हैं मुझे उम्मीद है मैं कुछ सुन पा रहा हूँ। So we're being too protective. तो हम खुद का बहुत ज़्यादा रक्षण कर रहे हैं।
We're not cooperating. हम सहयोग नहीं कर रहे हैं, We're not cooperating with the process. हम प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे। It says like the guru, like sadhu guru means he's cutting. साधु गुरु का मतलब है वो काटते हैं, He's cutting away all of the unwanted things. सारे अनर्थ जो है वो काटते हैं। So we're going to the hospital, we're going for the treatment program, and we're running up the hallway away from the doctor. तो हम अस्पताल में जा रहे हैं उपचार करवाने के लिए, और हम जो है गलियारे में, अस्पताल के गलियारे में दौड़ रहे हैं डॉक्टर से भाग के। Right? And then the doctor is running, I got to operate on you, you know. You're sick, you have problems. और डॉक्टर जो है हमारे पीछे भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे आपका ऑपरेशन करना है, आप बीमार हैं, मुझे आपको ठीक करना है। And then you have your diploma that you're official doctor, and the knife in the other hand. You're running after the patient. I'm really a doctor, and I really have a good knife, right? Trying to convince the person. You're running after them. तो ये जो डॉक्टर है उनके हाथ में डिप्लोमा है और दूसरे हाथ में एक चाकू है, ताकि वो मरीज को आश्वस्त करना चाहते हैं कि मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ और मेरे हाथ में बहुत अच्छी चाकू भी है और मैं आपका उपचार कर सकता हूँ। So we're too attached. तो हम बहुत ज़्यादा आसक्त हैं। Even something is killing you, but you'll not allow the surgery. कोई चीज़ जो है आपको जो है मार रही है, लेकिन फिर भी आप अपने आप पे सर्जरी करने नहीं देते। Because so much attached. क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आसक्त हैं। So there must be cooperation. तो इसलिए अवश्य सहयोग करना होगा with the process. इस प्रक्रिया में। So if we really want Krishna, then we have all these unwanted desires, all these material attachments, bodily conception of life. This is all what is blocking us and creating the obstacles, not allowing us to surrender and serve Guru and Krishna properly. तो अगर हम असल में कृष्ण चाहते हैं तो ये सारे भौतिक इच्छाएं, भौतिक आसक्ति, ये हमारे रास्ते में रुकावट हैं और हमें रोक रहे हैं। कैसे हम कृष्ण को शरणागत इन्हीं कारणों की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। So Krishna is testing how much, even in the middle of all of that, how much really do you want to understand me and surrender to me and serve me? तो कृष्ण हमारी ये परीक्षा ले रहे हैं इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी आपकी कितनी ज़्यादा इच्छा है कि आप मुझे शरणागत करना चाहते हैं, मेरी सेवा करना चाहते हैं। And in spite of all of those obstacles, you're still convinced and trying to convince Krishna. और इतने सारे मुश्किलों के बावजूद भी आप आश्वस्त हैं और कृष्ण को भी आश्वस्त करना चाहते हैं। Then Krishna, he takes a vow to help you and protect you and to deliver you. और फिर कृष्ण वहाँ प्रतिज्ञा लेते हैं आपकी मदद करने के लिए, आपको मुक्त करने के लिए और आपको वहाँ से बाहर निकालने। Prabhupada said you can be Krishna conscious in one moment. प्रभुपाद कहते हैं आप कृष्ण भावनामृत एक क्षण में हो सकते हैं। Right? If you get mercy of Guru and Krishna, one moment you can become Krishna conscious. अगर आपको गुरु कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, एक क्षण में आप कृष्ण भावनामृत बन सकते हैं। Prabhupada said, if you would just cooperate, प्रभुपाद कहते हैं अगर आप बस सहयोग करें, but because of this stupid mind लेकिन इस बेवकूफ and मन की material वजह से attachment to the body, mental speculation, bodily relations, और भौतिक आसक्ति अपने शरीर और शरीर के संबंध अपने मनोधर्म से, material desires, material attachments, भौतिक इच्छाएं, भौतिक are आसक्ति not allowing us to be simple हमें अनुमति नहीं दे रहा कि हम सरल बन सकें and sincere enough और ईमानदार इतने बन सकें to cooperate. कि हम सहयोग कर पाएं। This is the root of the problem. ये समस्या की जड़ है। Do we recognize that? क्या हम इसको समझ पा And रहे then हैं? are we asking for help how to overcome all of that? और क्या हम मदद मांग रहे हैं कैसे हम इससे बाहर आ सकते How to हैं? get free from all of that? कैसे इन सब चीजों से मुक्त हो सकते हैं? Then you get mercy of Bhagavatam, mercy of Guru and Krishna, Tab mercy of aapko- Holiness. तब आपको भागवत की कृपा, गुरु कृष्ण की कृपा और भगवान के पवित्र नाम की कृपा प्राप्त होगी। So we have to be convinced enough to convince Krishna. तो हमें इतना आश्वस्त होना होगा कि हम कृष्ण को आश्वस्त कर सकें। And the more we hear about Krishna and the process, the more intelligence we get by Guru Krishna's mercy, the more that we'll realize, no, I have to do this. I have to accept the opportunity. It's a great opportunity. तो जितना ज़्यादा हम यहाँ श्रवण करेंगे गुरु कृष्ण की कृपा से हमारी बुद्धि और ज़्यादा मजबूत होगी, हम ज़्यादा समझ पाएंगे कि मुझे इससे मुक्ति चाहिए और हम इसमें आगे जाने का प्रयास करेंगे। I must have it. I must do it. मुझे अवश्य इसको प्राप्त करना होगा, मुझे अवश्य इसको करना होगा। So in spiritual life, you have to have great determination. तो आध्यात्मिक जीवन में आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। And unfortunately, because of our satsanga, material association, material attachment, and material desires, this is weakening our determination to do what is required. और दुर्भाग्य से इस असत्संग की वजह से, भौतिक आसक्ति, भौतिक संग की वजह से हमारी ये इच्छा धीरे-धीरे कम हो जाती है। So we're losing our enthusiasm and our determination. तो हम अपना उत्साह और अपना दृढ़ निश्चय खो देते हैं।
This is like a poison. This is the toxin. ये जहर है, ये जो है गंदे पदार्थ, Because we're not plugging into the purification process. क्योंकि हम अपने आप को इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया से जोड़ नहीं रहे हैं। We're not clearing हम सफाई regularly नहीं कर रहे the हैं। doubts, the questions, the weakness, the confusion, all those different ways that Maya is trying to cover us and drag us away. हमारे सारे संदेह, हमारे सारे सवाल, हमारे सारे गलतफहमी, जिस भी तरीके से माया हमें ढकना चाहती है, हमें रास्ते से बाहर निकालना चाहती है, We're being neglectful. हम उसको जो है We're being नकार रहे foolish. हैं, हम मूर्ख बन रहे We're हैं, not understanding the danger of the situation. हम परिस्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, We're not understanding the risk. हम कितना खतरा है इसको नहीं भांप पा रहे हैं, Therefore, we're not making proper priority. इसलिए हम सही प्राथमिकता नहीं कर पा रहे हैं। Then you're overwhelmed. You'll be overwhelmed with all these toxins of doubt and hesitating and, no enthusiasm, no determination, no conviction. This thing will just overwhelm you. तो इन सारी चीज़ों से आप पूरी तरह मोहित हो जाते हैं, इतने सारे संदेह, इतने सारे सवाल, आपका उत्साह की कमी, आपके दृढ़ निश्चय की कमी, प्रेरणा की कमी, इन सारी चीज़ों से आप पूरी तरह ढक जाते हैं। Maya has covering potency that will cover you over. माया को आवरण करने की शक्ति है, वो आपको आवरण कर देती है आपके ऊपर। It's like you're in a hole, like in the grave, right? And someone starts putting the dirt, like, on you, right? Like, at which point do you say, this doesn't look good? This isn't going to end well. जैसे आप किसी कब्र के अंदर हैं और आपके कब्र के ऊपर और मिट्टी पे मिट्टी डाली जा रही है, तो किस क्षण आप ये समझ पाएंगे कि ये जो है सही अंत नहीं होने वाला है इसका? Right? You're like, well, I can still see, और हम जो है I can still see. हम इस तरह से मिट्टी हटा के आंखों से कहते Right? हैं, And then अभी the भी देख arms are सकता हूं। covered, right? Well, like, I can still see. और हमारे Right? हाथ जो I है mean, फंस at गए which point do you realize what's happening? हमारे हाथ फंस गए और अभी भी हम कह रहे हैं हम देख सकते हैं, तो किस समय हम ये साक्षात्कार कर पाएंगे इस बात का? Or let's say in India, right? You're laying on some wood. जैसे भारत में दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, It जैसे आपको happens to लकड़ी be a पे funeral pyre, right? लकड़ी पे लिटाया गया है, आपका अंतिम संस्कार होने वाला है, And we're so callous, we're like trying to get comfortable on the wood, और हम इतने जड़ दिमाग वाले हैं, हम वो जो लकड़ी चिता पे हमें लिटाया गया है लकड़ी पे, उस पे भी हम सुविधाजनक रूप से लेटने का And all of a प्रयास कर रहे sudden you smell like some petrol, हैं। और धीरे धीरे आपको जो है किसी ईंधन की महक आने लगती things है, are happening around you like this, this isn't looking good, और ये सब चीजें जब आपके चारों तरफ होने लगेगी, आपको तब क्या आपको People महसूस start होगा कि showing अच्छा up crying and they got flowers and it's like, wow, like what's going on here, फिर लोग जो है रोते हुए आएंगे, कुछ फूल लेकर आएंगे, फिर हम सोचेंगे यहाँ हो क्या रहा है? Looks like some kind of funeral or something going on. सोचेंगे और किसी तरह का किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है, And we're the one laying on the wood. We don't realize it's us, और हमें ये पता भी नहीं चल पा रहा है कि हम ही हैं जो उस लकड़ी पे चिता पे लेटे हुए हैं, Like we're wondering, like, are we going to be invited to the party? और हम सोच रहे हैं कि हमें जो है इस पार्टी में बुलाया जाएगा। We're not understanding we are the party. हम ये समझ नहीं रहे कि हम ही पार्टी हैं। Oh, Krishna. So when will we wake up? तो हम When कब will we जागेंगे? do something about it? कब हम इसके बारे में कुछ करेंगे? At some point, if we don't do anything about it, then we'll be so covered over, you'll be so weak, so forgetful, no determination, no enthusiasm, no interest, then you're dead. Your interest for bhakti, devotional service will also be finished. और अगर हम इसको उस समय तक, वो समय आने तक इसको नहीं करेंगे, तो हमारे पास कोई योग्यता नहीं रहेगी, हम पूरी तरह कमजोर हो जाएंगे, हमारा उत्साह खत्म हो जाएगा, हमारा आश्वस्ति खत्म हो जाएगा, विश्वास खत्म हो जाएगा, हमारा निश्चय खत्म हो जाएगा, तो आध्यात्मिक रूप से हम पूरी तरह मर जाएंगे। Because we're associating with asat sangha. क्योंकि हम असत संग कर रहे हैं। So not only are we not purifying the toxins, we're actually increasing the toxins. तो ना तो हम सिर्फ ये अवशिष्ट पदार्थों को अंदर और जमा कर रहे हैं, हम और ज़्यादा उसको बढ़ा रहे हैं। So shouldn't you know this up front in your decision making? तो क्या आपको ये पहले नहीं पता चल जाना चाहिए? आपको अपना फैसला पहले नहीं ले लेना चाहिए? Is there any more important priority? Do you think that there's there? क्या आपको लगता है इससे और ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज़ है, प्राथमिकता है आपके लिए? That if you don't make this priority, you fail spiritually and materially? Is that not a detail that you should consider?
कि अगर आप इसको प्राथमिकता नहीं बनाएंगे तो आप भौतिक रूप से भी असफल हो जाएंगे, आध्यात्मिक रूप से भी असफल हो जाएंगे। तो क्या ये चिंता करने वाली बात नहीं है? That's an interesting detail. ये एक बहुत महत्वपूर्ण Not बात है। having that information, you fail spiritually and materially. Yeah, that's important information. तो अगर ये जानकारी आपके पास नहीं है तो आप भौतिक रूप से भी असफल हो जाएंगे, आध्यात्मिक रूप से भी असफल I हो would जाएंगे। consider that important information. How about you? तो हमें इसको एक महत्वपूर्ण रूप से विचार करना चाहिए, महत्वपूर्ण बात। Do you have a question? आपको कोई सवाल? Yeah? You all right? आप ठीक हैं? Don't say anything about your husband. अपने पति के बारे में कुछ मत Okay, कहिए। because I'm doing surgery on him right now. I don't want to lose the patient. मैं उनके ऊपर सर्जरी कर रहा हूँ, मैं इस मरीज को खोना नहीं चाहता। Right? So don't say anything. He's in process. He's in one room getting surgery. Consider yourself in the other room getting surgery. Don't worry about his surgery. तो उनके सर्जरी के बारे में चिंता मत कीजिए। उनका एक कमरे में उनकी सर्जरी चल रही है, दूसरे कमरे में आपके लिए तैयारी हो रही है। And David's like, look, I'm just going to the class. I didn't know I'm signing up for surgery. You know what I mean? देवा सोच रहे हैं मैं तो बस क्लास में जाता हूँ, मुझे पता नहीं मैं जो है सर्जरी के लिए हस्ताक्षर कर रहा हूँ। Anyway, you're here, you're getting it. Consider yourself lucky. You know, it's like, okay. You कोई बात know. नहीं, आप यहाँ आए, अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे ये चीज़ मिल रहा है। You're very fortunate. आप बहुत भाग्यवान हैं। So anybody? Last कोई thing? आखिरी चीज़, Any burning question? किसी को कोई जलता हुआ सवाल? No? नहीं? Are you tired? क्या आप थक गए हैं? Are you hungry? क्या आप भूखे हैं? We're going to feed you very soon. हम आपको बहुत जल्दी खिलाने वाले हैं। We're going to fatten you up a little bit. हम आपको थोड़ा मोटा करने वाले हैं। Okay, everyone. Thank you very much. I appreciate your consideration. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी की सराहना करता हूँ, आपके विचार की सराहना करता हूँ। If someone tell, yes, yes. कोई कुछ? David, you all right? देवा आप ठीक हैं? Yeah? You going to be all right? आप ठीक होंगे? All right. ठीक है। I want this association all the time. This is this. माता जी का सवाल है, मैं ये संग जो है हमेशा चाहती हूँ अपने पास। I'm sorry. What was it? She says, I want this association all the time. You want the association all the time? So you have to get an apartment right next to the dialysis machine. तो आपको जो है अपना घर उसी बिल्डिंग के पास खरीदना होगा जहाँ पे ये उपचार कार्यक्रम चल रहा है डायलिसिस का। As close as possible. जितना नज़दीक हो सके उतना ज़्यादा। Even sometimes they put the hose out the window, right? और कई बार होता है वो खिड़की से छेद करके भी बिल्डिंग से बाहर लेके जाते हैं। That's intelligent. ये बुद्धिमत्ता है। Once I realized by Krishna's mercy, Guru's mercy, how much benefit I'm going to get spiritually associating and hearing from my spiritual master, to me, there was everything else was meaningless. It became meaningless to me. तो गुरु कृष्ण की कृपा से जब मैं ये समझ पाया कि मेरे आध्यात्मिक गुरु के संग में श्रवण कीर्तन करने से जो मुझे फ़ायदा आध्यात्मिक रूप से मिलने वाला है, उसके बाद मेरी बाकी कोई भी चीज़ें मेरे जीवन में बेकार हो गई, उसका कोई महत्व ही नहीं रह गया मेरे जीवन में। Because I understood, if I don't get this help, क्योंकि मैं ये समझ पाया अगर मैं ये मदद नहीं ले and पाया this spiritual support, और ये आध्यात्मिक सहयोग and all the spiritual things that we need, if I don't get this, here's my opportunity. If I don't get that, I'm useless to myself. What to speak of my family and my friends. तो अगर मेरी जो आध्यात्मिक ज़रूरतें हैं जो मेरी पूरी की जा सकती है संघ के माध्यम से, अगर मैंने ये प्राप्त नहीं की तो मैंने अपना समय बर्बाद किया, मैंने अपना जीवन बर्बाद किया, स्वयं का और अपने मित्रों का, अपने परिवार वालों का भी। If we don't become nice devotee, pure devotee of Krishna, we're demons. अगर हम भगवान के भक्त नहीं बनते हैं, शुद्ध भक्त नहीं बनते हैं, तो हम असल में असुर हैं। So it's like a demon, like, running after you, saying, I just want to associate with you and help you. It's like, okay. तो अगर कोई असुर है और आपके पीछे भाग रहा है और कहे मैं आपके साथ संग करना चाहता हूँ, आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप तो कहेंगे ठीक है, लेकिन मुझसे दूर रहो। I'm just trying to help you.
मैं बस आपको मदद करने आया हूँ। I'm just coming to help you. मैं बस आपको मदद करने आया हूँ। Sign the papers, old man. ये कागजों पे हस्ताक्षर करो बूढ़े आदमी। You know, with that kind of help, you know, I think I'll just try to figure it out myself. You know what I mean? अगर ऐसा मदद कोई मुझे करने वाला है तो मैं खुद पता लगा लूँगा मेरी मदद कैसे हो सकती है। Right? So if we're demons, we don't even like ourselves, let's be honest. तो अगर हम असुर के जैसे हैं तो हम खुद को भी पसंद नहीं करते हैं। चलिए हम अपने साथ अगर But if you wake up and you look at yourself in the mirror and say, there's a demon. तो क्या आप जब सुबह उठ के कहते हैं आईने की तरफ देखकर कहते हैं ओ ये देखो ये असुर है यहाँ पे। There's a demon. Through the tilak, he's still a demon. तिलक लगाया है लेकिन फिर भी असल में असुर है। That means your eyes are opening up. That means realization is coming. आपकी आंखें खुल रही हैं, अब आपको सही समझ It's advancement. ये विकास हो रहा है आपका। Right? And then you say, you know, if I was anybody else, I wouldn't want to associate with this person. और फिर आप कहेंगे अगर मैं कोई और व्यक्ति होता तो मैं खुद इस व्यक्ति के साथ संग नहीं I mean, करता। step away from yourself for a second. उससे दूर हो जाओ थोड़े समय के लिए। If you had a choice, would you associate with yourself? अगर आपके पास कोई फैसला करना हो कि आप स्वयं के साथ संग करें, If you had to pick some good association, would you look at yourself and say, oh, I got to hang out with that guy, you know? कि आपको किसी अच्छे संग का चुनाव करना है तो क्या आप कहेंगे कि मैं स्वयं के साथ संग करना चाहता हूँ? Right? I want to become like him, you know? मैं जो है ऐसा बनना चाहता हूँ, उनके जैसा बनना चाहता हूँ। Right? So we're like not interested, right? तो हमें कोई रुचि नहीं है इसमें। And then we're like, well, I don't know why nobody likes me, you know? और फिर हम कहते हैं पता नहीं लोग मुझे क्यों पसंद नहीं करते। I don't know why they're not attracted to me, you know? मुझे पता नहीं लोग मेरी तरफ आकर्षित क्यों नहीं होते। I'm a nice demon. मैं एक अच्छा असुर हूँ। I love people. मैं लोगों से बहुत प्रेम करता हूँ। और दिल का ऐसा हाथों से निशान बनाता है। Oh man, this drives me crazy, you know? ये सब चीजें मुझे पागल बनाती हैं। And then this ladies like they're acting like, you know, they don't want their mascara to like melt, right? And they're like ये चीजें और it's like a fish, you know? और वो I can't stand this thing, you know? वो स्त्रियां मुझे और पागल बनाती हैं। I'm emotional right now. और वो स्त्रियां मुझे और पागल बनाती हैं। There's certain things that just like, why are they doing this? This is crazy. This isn't gonna do anything. It's fake tears, it's fake wind, the whole thing is fake. Okay, the whole thing's a Hollywood production. We're not buying it. तो जो है कुछ महिलाएं जो ऐसा करती हैं उनके आंखों से काजल ना बह जाए इसलिए हाथों से पंखा करती रहती हैं और ताकि वो काजल उनके आंखों से बहे नहीं। तो उनका ये जो नाटक है इस तरह से करना और पूरी तरह से सारे नाटक है इसी तरह का ड्रामा चल रहा है। This is so deep, you know. I need to associate with this type of person, you know what I mean? मैं ऐसे लोगों के साथ संग करना चाहता हूँ। This is a deep person that can really understand me, you know? ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो असल में मुझे गहराई से समझ सकता है। They'll be able to really feel my pain, you ये know? असल में मेरा दर्द जो है समझ पाएंगे ये लोग। Because they're so compassionate. क्योंकि इनके अंदर बहुत करुणा है। Don't say like that. I'll show you my heart. मैं आपको अपना दिल दिखाऊंगी। I don't miss all of this thing, you know what I mean? मैं इन सारी चीजों को बहुत याद करता हूँ। It's all manufactured. It's not complete nonsense. It has no reality. ये सब पूरा बकवास है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है इन सब बातों में। Who else am I offending? Am I offending all these people? क्या मैं इन सारे लोगों को नाराज I कर रहा showed you हूँ? my किसी को heart. अपराध I कर रहा showed हूँ? you my compassion. ये जो है दिल की तरह बनाते हैं अपने I हाथ से। showed you which mascara to buy. वो कहते हैं किस तरह का काजल खरीदना चाहिए। That no matter how many false tears I have, you know, it still doesn't melt off your face. कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने जो है
आंसू बहाएं फिर भी जो है ये आंखों से काजल बहेगा नहीं। The Indian boys are like, what is he talking about, you know? और ये भारतीय लड़के सोच रहे हैं ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? What does this have to do with fourth dimensional, knowledge, you know? ये चतुर्थ आयाम के ज्ञान के साथ इस सब का क्या लेना देना है? This Maharaja is making hearts and he's like, talking about mascara and, false tears, and what does this have to do with bhakti? ये महाराज जो है बातें कर रहे हैं हाथों से कैसे दिल बनाना, आंखों के काजल के बारे में, गलत आंसुओं, नकली आंसुओं के बारे में, ये सब के He's like a simple devotee, right? He's like, he's happy, right? He has no idea what I'm saying, but he's happy. That's the main point. ये सरल भक्त है, इसको कोई समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बातें कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये That's all that matters. यही सब मायने रखता है बस। You'll figure it out later how it worked, all right? बाद में आप पता लगाइए कैसे आप खुश हो रहे थे। All right, I better stop. I keep trying to stop. मैं हमेशा रुकने का प्रयास करता हूँ। That's why I told you, someone's forcing me to go longer. I'm trying to stop, actually. मैं असल में रुकने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज मुझे I'm in मजबूर the कर रही है कि मैं process जारी of रखूं। stopping. मैं जो है स्वयं को रोकने की प्रक्रिया में हूँ। But sometimes, like a big bus, right? It takes a while before it actually stops. You know what I mean? कभी कोई बड़ी बस होती है तो इसको थोड़ा समय लगता है रुकने के लिए। So we're in the process. तो हम अभी प्रक्रिया में हैं रुकने Or की। like a big ship, हम एक बहुत बड़ा जहाज है। It takes a while for it to just finally dock. You know what I mean? थोड़ा समय लगता है कि अंत में ये अपने पड़ाव में जा सके। So we're docking. We're in the process of docking right now. तो हम अपने पड़ाव में जा रहे हैं। हम पड़ाव में जाने की प्रक्रिया में हैं। Any other question? Anything? कोई और सवाल? Everyone's good? सब कुछ ठीक है? Everyone's going looking for a psychiatrist right now. अभी सभी कोई जो सोच रहे हैं कैसे मैं किसी मनोचिकित्सक के पास जाऊं। Trying to recover from this class. I need a psychologist now. इस क्लास से उबरने के लिए मुझे किसी मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ेगी। The parents, the husband, wife, they're going for counseling, right? They're going looking for a counselor, how to deal with the marriage, right? तो जैसे कुछ विवाहित शादीशुदा व्यक्ति हैं वो लोग काउंसलर के पास जाते हैं, सलाहकार के पास जाते हैं, वो कैसे समस्या का We're like shaking everything up, you know what I mean? तो ये अच्छा है, हम सभी चीज़ों को अभी हिला रहे हैं यहाँ पे। Or loosening it. या ढीला कर रहे हैं चीज़ों को। Just like the dirt, right? It's like a hard, like a rock, right? You can't just loosen it. So you have to like break it up. Amba taught me this thing. You have to make it like a little softer, you know? जैसे कभी-कभी जो है बहुत चीज़ें पत्थर बहुत सख्त हो जाते हैं, कभी कड़े हो जाते हैं मिट्टी, तो अलग-अलग चीज़ों में उनको जो तोड़ कर उसको ढीला करना होता है। Then it's not really earth, but the rocks are like a little smaller. तो अब ये जो इतना बड़े-बड़े पत्थर नहीं रह गए हैं, पत्थर जो है थोड़े छोटे-छोटे हो गए हैं। So you still can't plant there. अभी भी आप वहाँ But now it's like breaking up. We're getting there, you know? लेकिन अभी हम तोड़-फोड़ मचा रहे हैं। Jackhammers. और वो जो हथौड़ा है वो ऐसा पूरा हिल रहा है। You see on the side of the road? आप रोड के सड़क के किनारे देखेंगे वो लोग रोड तोड़ने का इस तरह प्रयास करते हैं। If the guru walks in with one of these jackhammers, you know you're in trouble, man. I'm telling you. अगर गुरु क्लास के अंदर इस तरह के मशीन लेकर आते हैं तो आपको समझना चाहिए आप परेशानी में। He has it over his shoulder. He's like, "Yo, welcome to the class. We're gonna have a great class today," you know. वो अपने कंधे में जो है ये उपकरण औजार लेके क्लास में आते हैं, कहते हैं आज हम बहुत बढ़िया क्लास करने वाले हैं। And it's wireless, so you don't even have to plug it in, man. It और just इसमें goes ये- and goes and goes. और ये बेतार मशीन है, इसमें किसी तार को भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, स्वयं चलता रहेगा, अपने आप चलता ही रहेगा ये। One person was telling me, you know how the building, when you knock the building down, they have this big ball, right? So he's telling me your preaching is like, this ball that's crashing into the building, like this is your preaching is like this, एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे आपका प्रचार ऐसा है जैसे बिल्डिंग को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी सी गेंद लाई जाती है भारी भरकम लोहे की और वो बिल्डिंग को ऊपर मारता रहता है बिल्डिंग को गिराने के लिए, तो आपका प्रचार like a wrecking ball, जैसे तोड़ने वाला जो ये बड़ा मशीन होता है। So after that it's like everything is like all over the place, isn't it? You're trying to like figure out, you're like looking over, trying to pick up pieces and gluing it back together again, और इसकी क्लास के बाद जो है सब कुछ टूट जाता है, फिर वो जो है गोंद से सब चीज़ों को चिपकाने का प्रयास करते हैं। Cement blocks being blown out, mother of all bombs, जो सारे सीमेंट से जुड़े हुए थे वो सब भी टूट चुके हैं,
सारे बमों की माँ को वहाँ गिरा दिया गया। And then we got like some glue and we're trying to like paste it all back together again, you know. और हमको Just trying to make sense of this after that class, you know. Something that looked familiar to what I thought was normal, you know what I mean? और हम कुछ थोड़ा सा गोंद लाके सारी चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करें। जो हमारा पहला विचार था, उस सारी चीज़ों को हम सोच रहे हैं सही विचार हैं, उसको हम एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं इस क्लास को And सुनने के then बाद। right now you can't even make sense of it, right? It's not even something you can glue together. It's like demolished, you know. और अभी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अब ऐसा भी नहीं कि सारी कौन सी चीज़ों को कहाँ जोड़े, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सब कुछ पूरी तरह बिखर चुकी है। You're gonna have to make some new bricks. अब आपको जो है नई ईंट बनानी पड़ेगी। So this isn't going to be easy. तो ये आसान नहीं होगा। Anything else? The bus is getting ready to stop. कोई और चीज़? अब बस रुकने वाली है। The brakes are being applied. इस पे ब्रेक लगा दिया गया है। The screeching is going on. अब जो चक्के घिस रहे हैं। But it didn't stop yet. अभी तक रुका नहीं है लेकिन। All right, thank you for this philosophical discussion. I appreciate it. धन्यवाद ये सिद्धांतिक चर्चा के वजह से मैं बहुत सराहना करता हूँ इसकी। Completely fourth dimensional conversation. पूरी तरह से चतुर्थ आयाम का वार्तालाप हुआ आज हमारा। Or at least how to get there. या फिर कैसे हम वहाँ And पहुँच what's सकते हैं। stopping us from getting there. और हमें क्या चीज़ें रोक रही है जिससे हम वजह से हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। So I hope that helped you a little bit. तो मुझे उम्मीद है इसने आपकी मदद की And होगी आज thank you for थोड़ी। giving me a chance to speak again. और मुझे बहुत मैं आपका I धन्यवाद always करता हूँ। मुझे I'm the मौका most दिया। happy when I'm preaching और मैं सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ जब मुझे प्रचार करने का मौका मिलता है। because this makes my guru most happy when I'm preaching. क्योंकि ये मेरे गुरु को प्रसन्न करता है जब मैं प्रचार करता हूँ। And Prabhupada. और प्रभुपाद को। So they're pleased, we're pleased. वो प्रसन्न है तो हम भी प्रसन्न होंगे। And without mercy of Guru and Krishna, without their manifestation of mercy, who's going to be pleased and happy? Nobody. और बिना गुरु कृष्ण की कृपा के और उनके प्रकट हुए बिना कोई भी खुश नहीं हो सकता। So you see by the results, the effect of the association means hearing. तो आप उस संग के प्रभाव से, संग का मतलब है श्रवण, श्रवण के प्रभाव से या उसके फल से आप देख सकते हैं। Thank you very much, everyone. Appreciate it. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैं बहुत सराहना करता हूँ सभी की। Well, the bus has stopped. The bus has run out of petrol. बस का जो है पेट्रोल खत्म हो गया है। One mercy to the other, right? This is mercy. Nana Krishna Prasadam, Jagannath Prasad. That's another kind of mercy. एक कृपा उसके बाद दूसरा कृपा। पहले कृष्ण So का we're था, just उसके बाद running from जगन्नाथ one प्रसाद। mercy to the other mercy. तो एक कृपा से दूसरे कृपा की तरफ हम जा रहे हैं। It's like hybrid. I'm a hybrid bus. जैसे ये हाइब्रिड बस है। I'm running on this fuel here, then I go and take Krishna Prasadam, that switches to another kind of mechanism, how to get mercy, right? यहाँ मैं हरि कथा कृष्ण कथा करके ईंधन पा रहा हूँ। अब अंदर जाके प्रसाद लेके और But either और way, ईंधन लूँगा और अगले प्रोग्राम में It's जाऊँगा। Krishna entering inside of your body, बस किसी भी तरह से कृष्णा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश either करते हैं। through the ear कानों के माध्यम से or through the prasadam. या प्रसाद के माध्यम से। So the more you hear and chant means more you're inviting Krishna inside of you. तो जितना ज़्यादा आप श्रवण कीर्तन करेंगे उतना ज़्यादा आप कृष्णा को निमंत्रण दे रहे हैं अपने अंदर प्रवेश करने के लिए। Then he'll purify all the contamination out. तो वो सारे अंदर के भीतर की गंदगी को बाहर निकाल देंगे। Then you'll be pure devotee. तब आप एक शुद्ध भक्त Then बनेंगे। you'll be spiritual being. तब आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। Right now it's like the small soul and this big suit, this big covering is there. अभी फिलहाल एक छोटी सी आत्मा है, उसके ऊपर बहुत बड़ा सा आवरण ढका हुआ है। So the more you put Krishna in, the bigger your soul becomes. तो जितना ज़्यादा आप कृष्णा को भीतर डालेंगे उतना ज़्यादा आपकी आत्मा And it बड़ी हो like जाएगी pushes against all of this covering. और इन सारे आवरण को धक्का मारेगी। So that becomes less and less and less material covering. ताकि ये जो भौतिक आवरण है उतना उतना कम होता जाएगा It gets dissolved. और ये सारा गायब होता जाएगा। And when all of that is dissolved, all of that materialism and material contamination, false ego is dissolved, what's left is full-blown soul that is in its fullest spiritual potency and identity. और जब क्या होगा जब ये सारा मिथ्या अहंकार, ये सारे भौतिक आवरण, भौतिक कलमश सब सारा मिट जाएगा तो ये पूर्ण रूप से विकसित आत्मा जिसकी ये इच्छा
आत्मा की जो असल आत्मा प्रकट हो जाएगी। That's what we're trying to achieve here. और ये हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। More spiritual energy and less material energy. ज़्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा और कम भौतिक ऊर्जा। So the more we get rid of the material toxins, the more you put Krishna inside to prasadam, to Harinam, to Krishna-katha, then we become spiritualized, Krishnaized. तो जितना ज़्यादा हम इन गंदे पदार्थों को बाहर निकालेंगे, जितना ज़्यादा कृष्णा को भीतर डालेंगे हरि कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण प्रसाद के माध्यम से, उतना ज़्यादा हम जो है आध्यात्मिक व्यक्ति बनते जाएंगे। So now you did the first part of the treatment program. अब हमने पहले भाग को पूरा कर लिया। You heard about Krishna. You heard about Krishna Katha. You chanted Hare Krishna. You took the medicine. हमने कृष्ण कथा सुना, कृष्ण नाम कीर्तन किया, हमने औषधि ली है। Now we need the diet. अब हमारे सामने Krishna Prasad, Jagannath Prasad. जगन्नाथ प्रसाद। Perfect. You're in the right place at the right time. ये सबसे आदर्श जगह है, आदर्श समय है। Sometimes you go to one shop, it has everything in that shop. कभी-कभी आप किसी दुकान में जाते हैं और उस दुकान में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। So you get everything here. तो आप वहाँ आपको सब कुछ मिल जाता है। Come. आइए। Mataji's come. माता जी भी आई। Jagannath Mahaprasad, Krishna Prasadam, कृष्ण प्रसाद। Hare Krishna